हो गई स्कैन शुरू हो गई सर इधर हो गई ना सर आ गया काला काला का तुम्हारे मेरा देखना आ ਜਾਂਦਾ ਆ ਲੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਕੋਰ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਸਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈਂਡਲ ਨੇਮ ਲਿਖ DAWOOD टाइटल ना ले लिए इतने कितने वो तो लिखो ना टाइटल कितने लिखना टाइटल इतने टाइटल करो इधर एंड हो रहा हेडेड पाकिस्तान वर्सेस साउथ SAUT साउथ ऐसे ले लो सारे Africa Africa first T20 INTERMAT national जिसे हैंडल नेम है दाऊद SB4 DAWOOD दाऊद अगे SB4 to go in vain. Couldn't get any great power behind that, so he used it down just for the one. Yeah, 135 it was when David Miller departed. 5 for 135 they were, and hadn't even completed the 14th over. Last ball. And it's the end of a fine spell. Got a little bit of tap at one stage, but really good work. Ended up with tidy figures, impressive figures of 3 for 37, 137 for 8. Shoulders अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए अब सिर्फ 800 रुपए में अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ So 4 overs is the maximum that the bowlers bowl in T20 cricket. 3 for 37, it's good work. Going at shade under 9.5, but picked up those 3 wickets. That's important. 138 for 7 right now. 5 overs to go. Hashim, what are your thoughts? Yeah, I think South Africa under the pump here. They need to take what they can get. Beautifully bowled. Can't get enough of a good Yorker. Certainly one of the most difficult delivery to face as a batsman, unless you can scoop and reverse scoop. I think once that shot has come into the T20 game for the last 10 years, 15 years, it's taken the Yorker, it's created doubts in the bowler's head. But if you don't play that shot, then
bowler can feel very comfortable to just land it like Shaheen Afridi is doing at the moment. Yeah, and I guess there's also bowlers that can bowl it absolutely beautifully, that Yorker, like he does, versus guys who sometimes don't quite get it right. Yeah, he's made a name for himself bowling the Yorkers, and he's made a name for him bowling up front, getting the ball to swing back into the right-hander. And getting a wicket so often in that first over he bowls. Not quite carrying, just short. Yeah, you'd hope that Naba Peters just feels the situation of the game here and doesn't need to do too much. Just needs to get George Linde back on strike. With 5 overs, or 4 overs and 4 balls, it's a long way to go. It's 26 balls. If they even get 26 runs, I'm sure South Africa will be happy. So there's no real rush for him to play any shots and just tick it along a little bit. He's that on the onside. They're going to look to come back for the second. That's clever work. And good running as well. And Peter. Yeah, fantastic running. If you can't get the boundaries, you've got to keep the scoreboard ticking with the 1s and 2s. I must admit, Shaheen Afridi bowling so well. I would have been tempted to have somebody on the 1 on the leg side. Maybe even bringing Mudon up, tempting Naba Peters to go over Mudon and take the risk. It's a great opportunity for Pakistan to bowl South Africa out, so you can afford to be a touch more attacking, especially to a number 9. Three balls left in his spell. That's a dot ball. Yorker wide of that off stump for the big drive. Got to love the youth. I assume you got to love the youth. Yeah, you got to love it. He was touched late on that shot. Doesn't stop you from just practicing it afterwards, getting that feel-good feeling. There's every chance he's going to get another Yorker or full delivery, and he needs to be ready for it. Yeah, from around the wicket. 143 k's per hour, that last delivery. A little bit tighter in the line. Nicely driven, looking for one. Direct hit's out. No direct hit though. Yeah, I think they could have scampered a single there, and I think Rizwan will feel that he missed an opportunity of running to the stumps. There's ample time for him to get to the stumps. He got, yeah, ample time. Naba Peters survives another one. Right, 1 ball left in his spell, 1 ball left in this, the 16th over. Run rate is just dropping at the moment because of these wickets that have been falling. So Pakistan are getting right back into this game. That 171. 170 is a key number in all the games that have been played here. Average score batting first and generally wins. Looking to whip that on the onside. They like it, Pakistan, and up goes that finger as well. So Afridi coming back with his last delivery. He thinks he's got a wicket. There is going to be a little bit of a chance. Okay, roll it through. Flat line. Okay, I'm satisfied. No bet involved. Can we move to ball tracking when ready, please? Original decision is out. Pitching outside off. Impact in line. Wicket. Umpire's call. Steven, stay with your own full decision of out. Stand by. It is You're on number screen. 100. Signal now. T20 international wickets for Shaheen Afridi. He'll be delighted with the fact that he's got 100 of those wickets now. And Peter, a little shaken. कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। बंद करो।
Shoulders 800 रुपए में। किसानों के इस आलमी दिन पर सिंजेंटा की है दुआ, शाद रहे किसान, आबाद रहे पाकिस्तान। सिंजेंटा, हमारी जमीन, हमारी जिम्मेदारी। Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. His matric exams a couple of weeks back, and now he's in the cauldron. Quinn Parker playing for South Africa, 18 years of age. He's already made his debut a while back. He played many school matches and had to make valuable contributions. This is going to be a different equation for him, up against the might of Pakistan. 8 wickets down. Can he offer some support for George Linde? His temperament surely will be tested. Surveying the field from the non-striker zone. He's got to decipher this. Wrist spin from the left arm. Linde picks it, smashes it out and decides to turn down the single. He wants to keep strike. Interesting option taken. Still quite a few overs left. Reverse sweep and executes brilliantly. Well played by George Linde. 1 bounce, 2 bounce into the boundary ropes, and that's why he stayed on strike. Only if some of his mates would have understood the logic of batting in the death part of the innings. This is how it's done, really. He played the field beautifully. Yeah, element of wrist it wasn't Ramesh, because it's probably off the stumps, but that's what he's looking to do. Harbour strike, and then if he gets one that he recognises, feels he can pick up a boundary, he's going to try and cash in. Drags that one away. He's looking for 2. It charges off, but I don't think he'll be able to get back. No, they decide against it. Shaheen Shah Afridi picked up his 100th T20 international wicket. It makes him the 3rd on the list for Pakistan. Harris Rauf has got 110. Shadab Khan has got 107. And Shaheen Shah Afridi has 100 under his belt. He had a simpler plan this time around, which was to pitch the ball up. He was looking for the Yorker length after every couple of balls, and it worked perfectly for him. A little bit of reverse also. Quinn Parker hasn't faced too many mystery spinners of this ilk in the school level. He's played a few provincial games. He might have come across someone like a Shamsi. Can he deal with the variations? Big booming cover drive. Beautifully beaten. But he's got to hang in there. Make sure that he survives the next couple of balls. George Linde needs to be in his ear, just saying, just play it like a 4-day match. That's nicely punched, and he'll be off the mark. And that's exactly what he needs to do. That's well done, Parker. Last ball of the over. Linde wants to keep strike. Tries to carve that one away, and he throws his head back in disgust. 17 completed, 147 for 8. Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। वो फर्क से शोल्डर्स अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। अब सिर्फ 800 रुपए में।
Pakistan are almost at home chasing a score of 150, between 150 and 160 in T20 cricket. Anything up and over 160 usually challenges them. Abbas back into the attack this time from the old fort end. He's bowled nasty tonight. 2 for 22 off his 3 overs. And you do think to an 18-year-old they might be using the short ball tactic at some stage. It's nicely in behind it by Quinn Parker. He's thinking, where can I just knock it and get the man who's in, the man who's got 25 or 15 deliveries. How many of the last 17 can George Linde face? Went to the same school as Kahisa Rabada, St. Stithians. Also plays for the Lions, where KG is based. Swing and a miss. So he might have missed the Test series. We saw some wonderful shots from Kahisa Rabada. He hit some real impressive shots in his short innings in Port Elizabeth, and I think KG even had a tree planted at St. Stithians, if I'm not mistaken. I think when you get 100 in a school game, you end up getting to plant a tree, and I think KG planted one, unless they only allowed him to plant for his 5th fiver. That's nicely played, and he gets it away. That's a brilliant shot by Parker. Placed it beautifully. And possibly a little message to his partner that, look, you can depend on me, because that was really a very, very fine shot. Played with the full face of the blade. Huge grunt from Afridi. It was a full toss, probably trying for a Yorker length, and have a look at the straight bat coming down on the ball. Yeah, South Africa will be thinking, can Parker get Linde on strike? That's a real bonus boundary. Struck that wonderfully. Not too sure whether Abbas should be venturing that full. I think that's the better length to him, but he caresses that one as well. Can he get back-to-back boundaries? No, it's cut off. We'll get back for a second. That last boundary brought up the 150 for South Africa. Excellent batting, good timing on this occasion, good common sense cricket from a young 18-year-old. You can just imagine how the adrenaline's pumping there, Rameez. You think back to your first or second encounter for Pakistan, or me for South Africa. You feel that you're walking on air, and that you can play any shot. He's probably thinking that maybe I'll take him over extra cover next. That's nicely bowled. I'm a bit surprised Abbas hasn't used the short pitch delivery. I think as an 18-year-old you haven't faced many people of high pace throughout your school career, and in his limited first-class career probably hasn't come across many fast bowlers. And you would think that if he just dug one in and maybe asked him to take on a pull shot, it might be a good option. But for now, holding length. In fact, fine leg is now being brought into a short 45 on the leg side there. And that's beautifully played again, but this time picks up Babar Azam. So Linde will be on strike at the start of the next over. 18 completed, 153 for 8. इस मैजिकल ऑफर को जाने ना दें। अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Determine the fate of this contest. On a knife's edge, this innings, this contest, 170 plus will give South Africa a massive advantage. Harris Rolfe back into, he does bowl a very good Yorker. Goes for it, and Linde smashes it down the ground and decides to take the single. Maybe he's built up a bit of trust about him, Parker, and what he can do.
Haris Rauf can be extremely slippery and different to the rest of the cast. Great variation, different lengths. You're asking for a short ball, probably you'll see this now from Haris Rauf. Yeah, the only thing I would query though is, and in fact they're going to move fine leg back onto the fence, and that might be a good option, is that short pitch delivery followed up by slow ball. Haris Rauf's got a really good slow ball. And also getting their fielders in nice and tight. They realise that Linde wants to get back on strike, so they don't want to offer up any easy singles. The first delivery of the over was 146 kilometres an hour. That one 142. And when he's on and his Yorkers are good, he's very lethal. The variations are just tremendous. He's a great bowler to watch in T20 cricket, because at that pace he can get it to bounce. Also the full length Yorker, variations from 146 to Shine Afridi's 143. Afridi's pace is good, is up. Good news for Pakistan. That is well played, umpire. One bounce, two bounces. There's no short pitch delivery. It was a length delivery. It came at a decent pace, 143 clips. And he just clears that front leg and carves it over mid-off. Talk about temperament, talk about good batting sense. So it was pitched up, looking to attack the stumps, and allowed free flow swing of the bat through the line, through the ball for 4. Tremendous hitting under pressure. Yeah, George Linde's probably sitting the other side saying, why didn't I take some singles earlier? If this is the way he's going to play, 11 of 10 deliveries when his country really needs him. He's doing a great job. He gets a single here as well. So this has been a fantastic effort at the back end. South Africa would have been disappointed that they were 8 down with 3 overs to go. But these two are doing well, 18 of 16. Once again, being very sensible for an 18-year-old kid. He's engaged in a partnership of 18 of just 16 balls. Just do question the tactics there. I don't think they've thought it through. I don't think they would have done much research on Quinton Parker's batting, to be brutally honest. George Linde. And he carves that away, opens up the face. Whether he meant it to go that far, but he was definitely trying to get it behind square. This is turning out to be a good over for South Africa. 10 off the first 5. Yeah, we know Haris Rauf can be a bit expensive at times, so this must be very frustrating for Rizwan and co, because he's trying the Yorker length. He's been put away through mid-off for 4, and then this slice from the left-hander earning him a boundary. So when a wicket is needed, he's leaked runs. David Miller was superb for South Africa. He got himself to 82, not many other contributions. So this little cameo at the back end from George Linde is proving to be very, very vital. South Africa would have been hoping for at least somewhere around 175. While he's still there, if he's still there for these next 7 deliveries, you think that they could maybe get there. Oh, that's going to be judged wide, I feel. And it is. Ball out of anger than anything else, I think. A double bouncer. That's the challenge. You come off different surfaces around the world. You have to work out what length you hit in order to get the ball to come around shoulder height in the different facilities around the world. And Haris Rauf probably bowled a Pakistan length bouncer there rather than the South African length one. Really backed himself to bowl a very slippery bouncer, not to be. Slow delivery. They're going through the single. Uses his feet, but nowhere near the stumps in the end. So that's well run through by the two South Africans. 165 for 8. Enjoy unlimited free
free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Head and Shoulders अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस न आए। अब सिर्फ 800 रुपए में। इस मैजिकल ऑफर को जाने ना दें। अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। He'll have the ability to take on this mystery spinner. So more googlies, get the ball away from his strike, force him to hit over cover, probably. Yeah, wants him to hit to the bigger boundary, I would think so, Ramis. Gives it air and it's hit hard. One bounce and Linde decides to turn down the single again. He definitely fancies being able to take Safian down here. Saw him play the reverse sweep to good effect, and that's exactly what Rizwan's concerned about. He's actually changing his field to make sure that reverse swing is protected. Reverse swing, reverse sweep. Looking for a 6, I think. And he's got it. Yes, the contact's good enough. One moment there, I didn't sound like he'd hit it off the middle of the bat, but that's why he's turned down the single. And this is really good from George Linde into the 170s, South Africa. Tremendous innings. It has been 36 of 20, but the way he's played with the tail and also how he's handled himself when it comes to big shots, this really was extremely well done. Didn't catch the middle of the bat, but still went the distance. You can see it took hold of the QN there, and also the bat just turned a little bit in the hand, but still good enough to take it the 61 metres to get it over the fence. Goes again, and this one, there's no doubt, this is into the top tiers. Wow, what a strike by George Linde. You've got to say Sufyan as an option to bowl the last over, maybe not such a great idea because he's been pulverized, put away for plenty. A couple of sixes have allowed South Africa score in excess of 170. But Linde, what a night he's having. It's all about length, isn't it, Ramis? You can't afford to be too full these days in the modern era. They all practice the shot so often. If it's over-pitched, they back themselves with the long levers just to take it straight down the ground. We saw David Miller early on, and now George Linde. The two left-handers are having a wonderful night out here tonight. He's probably looking to spin it the other way. The wrong one was attempted, but it was in the slot. As you rightly said, it was in the spot. The length was up and it went the distance. Beautifully struck. That's only... Crowd are getting right behind Linde. That one could be adjudged. He moved early, so extra leeway for the bowler. I think he'd be better off just standing as still as he has done for the other two deliveries. Yeah, Rizwan asking him to bowl this variety. Wide, length, quick. Swings again and middles it again. Third maximum of the over. What a wonderful performance this is at the back end here by George Linde. Takes him to 48 of 23. South Africa over the 180s. Yeah, you always carry the risk of being put away if you use spinner as your option in the 20th over, and we've seen destruction here in this over. 3 sixes from Linde, 40 80s from 23 in South Africa, now 183. Swings again, is it enough? No, it's up in the air. They'll be charging if it doesn't get taken. But it does, it gets grabbed easily. Linde hits himself in disgust. He felt that was the kind of delivery that was in the slot that could have gone. But it has been a fantastic effort from him. 48 of 24 deliveries at the back end, exactly what... लेकिन कोई फायदा नहीं है, आखिरी गेंद थी और इसके साथ ही दोस्तों ओवर पूरा हुआ। 20 ओवर का खेल पूरा और साउथ अफ्रीका ने बना दिया एक जिम्मेदारी। रन और जीतने के लिए 184 रन का टारगेट सेट किया है।
साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान की टीम के लिए एक बहुत बड़ा हाई टारगेट स्कोर दिया है साउथ अफ्रीका की टीम ने। इस मैदान के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो इस मैदान के अंदर अभी तक जिस भी टीम ने लगाने की बदौलत टीम साउथ अफ्रीका जो स्कोर करने में अब कामयाब हुई है, उनकी तादाद 183 है और अब 184 रन का टारगेट है टीम पाकिस्तान के लिए इस मैच को जीते हुए सीरीज में 1-0 अप जाने के लिए। पाकिस्तान की टीम की बात कर ली जाए तो आज टॉस को जीता टीम साउथ अफ्रीका ने और उन्होंने टॉस को जीते हुए इस मुकाबले में बैटिंग करने का फैसला किया। इस ग्राउंड की सिचुएशन को देखते हुए अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाने की उन्होंने भरपूर तरीके से कोशिश की, क्योंकि पहली इनिंग्स में बैटिंग करते हुए जो एवरेज स्कोर रहता है वो रहता है 150 के ऊपर का और सेकंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर 135 के आसपास का रहता है। तो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 9 मैचेस और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 12 मैचेस जीते हुए हैं। तो इसलिए टीम साउथ अफ्रीका का ये डिसीजन जो कि अच्छा साबित हुआ, हालांकि लगातार उन्होंने अपनी विकेटों को अर्ली ऑन लूज किया, लेकिन फिर उसके बाद डेविड मिलर दी किलर शो स्टार्ट हुआ और डेविड मिलर की बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली आज, जिसका कोई जवाब नहीं था पाकिस्तानी बॉलर्स के पास। रीजा हेनरिक्स 1 रन बनाकर आउट हुए, बल्कि 9 रन बनाकर आउट हुए और जी बिल्कुल, अगर रीजा हेनरिक्स की बात इनको देखा जाए तो आज आए और गए, जिन्होंने बनाया 8 रन। रसी वेंडर डॉसन ने कोई रन नहीं बनाया। मैथ्यू ब्रिट्स ने 8 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया। डेविड मिलर ने 82 रन बना दिए और उन्होंने 40 गेंदों का सामना किया। 4 चौके और 8 बुलंदो बाला छक्के लगाए। उन्होंने 12 रन। हेनरिक लासन ने 13 गेंदों का ठीक है रहमान साहब, बिल्कुल ये तो कोई ऐसा नहीं है कि 300 रन नहीं बन गए हैं कि नामुमकिन जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास पूरा चांस है। वो बैटिंग जो उन्होंने अच्छी नहीं की है ना, वो अच्छी करनी पड़ेगी। और रिजवान और बाबर इन दोनों को खेलना पड़ेगा और थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट 140-150 से बढ़कर 184 तक चला गया है। और ये शायद जो है पाकिस्तान ने आखिर के जो ये 3 ओवर हुए हैं, ये पाकिस्तान ने शायद मिस आउट किया है। जो शाहीन शाह अफरीदी ने रोका था, जो ब्रेक मारा था, उसके बाद यकायक साउथ अफ्रीका की गाड़ी जो है बेतहाशा रफ्तार से भागी है और काबू नहीं कर पाए। राशिद खान हमारे साथ हैं, सलाम कहते हैं इकबाल भाई। सलाम भाई आपको। हमारे साथ रितेश श्रेष्ठा जी हैं, कहते हैं नो वे पाकिस्तान कैन विन दिस। देखते हैं जी, एक तरफ बात ये कही जा रही है कि जीत जाएंगे, एक तरफ बात ये हो रही है कि नहीं। दोनों में से एक तो होना है। वो तो नहीं होगा जो पिछले मैच में हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, कि टाई हो गया था। इसी मैदान पर इंडिया पाकिस्तान ने 2007 में टाई मुकाबला खेला था। उस वक्त हम लोग बच्चे थे, मेरे ख्याल से बहुत छोटे थे। जयदीप मोर भी हमारे साथ है। और आ रही है केड़ा थल्ले वाला नहीं, पुराना बहुत ही है। पुराना है। हाँ 2024 आ देखो। नहीं सारे लाइव है ना लाइव। कट के आज कर
अब हुआ कुछ यूं कि साउथ अफ्रीका की टीम आखिरी ओवर में 18 रन और सेकंड लास्ट ओवर में 12 रन की बदौलत, यानी कि आखिरी 2 ओवर्स में 30 रन लगाने की बदौलत टीम साउथ अफ्रीका जो स्कोर करने में अब कामयाब हुई है, उनकी तादाद 183 है और अब 184 रन का टारगेट है टीम पाकिस्तान के लिए इस मैच को जीते हुए सीरीज में 1-0 अप जाने के लिए। पाकिस्तान की टीम की बात कर ली जाए तो आज टॉस को जीता टीम साउथ अफ्रीका ने और उन्होंने टॉस को जीते हुए इस मुकाबले में बैटिंग करने का फैसला किया। इस ग्राउंड की सिचुएशन को देखते हुए अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाने की उन्होंने भरपूर तरीके से कोशिश की, क्योंकि पहली इनिंग्स में बैटिंग करते हुए जो एवरेज स्कोर रहता है वो रहता है 150 के ऊपर का और सेकंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर 135 के आसपास का रहता है। तो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 9 मैचेस और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 12 मैचेस जीते हुए हैं, तो इसलिए टीम साउथ अफ्रीका का ये डिसीजन जो कि अच्छा साबित हुआ। हालांकि लगातार उन्होंने अपनी विकेटों को अर्ली ऑन लूज किया, लेकिन फिर उसके बाद डेविड मिलर दी किलर शो स्टार्ट हुआ और डेविड मिलर की बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली आज, जिसका कोई जवाब नहीं था पाकिस्तानी बॉलर्स के पास। रीजा हेनरिक्स 1 रन बनाकर आउट हुए, बल्कि 9 रन बनाकर आउट हुए। और जी बिल्कुल, अगर रीजा हेनरिक्स की बात इनको देखा जाए तो आज आए और गए, जिन्होंने बनाया 8 रन। रसी वैन डॉसन ने कोई रन नहीं बनाया। मैथ्यू ब्रिट्स ने 8 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया। डेविड मिलर ने 82 रन बना दिए और उन्होंने 40 गेंदों का सामना किया। 4 चौके और 8 बुलंदो बाला छक्के लगाए। उन्होंने 12 रन। हेनरिक लासन ने 13 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का उन्होंने लगाया। और ड्यूमियन फ्रेरा ने 7 रन बनाए 6 गेंदों पे। जॉर्ज लिंडे ने बनाए 48 रन 24 गेंदों पे। बड़ी ही जबरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने आज के इस मुकाबले में, लास्ट तक बैटिंग करते रहे और आखिरी ओवर में 3 छक्के लगाकर उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को एक बेहतर स्कोर तक पहुंचाने में अहम रोल प्ले किया। और उसके बाद 1 रन बनाया आंदिला सेमिलेन और नकाबा पीटर ने 3 रन बनाए। 12 रन कवीना मफाका ने बनाए 11 गेंदों पे। 2 एक्स्ट्रास टीम पाकिस्तान ने फेंकी, 2 की 2 वाइड डिलीवरी थी और 1 वाइड अब्रार ने की, 1 वाइड हारिस रऊफ ने की। इस मुकाबले में टीम पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए पार्टनरशिप्स को, तो पहली विकेट 1 पर गिर गई थी, दूसरी विकेट 10 पर गिर गई थी, तीसरी विकेट 28 पर गिर गई थी। तो इब्तदाई तौर पर शाहीन और अब्रार की अच्छी बॉलिंग हमें देखने को मिली, जिसके बाद अगर बात कर लेते हैं हम तो चौथी विकेट 71 के स्कोर पर जाकर गिरी। थोड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली। हेनरिक का लासन आउट हुए, 5वीं विकेट 104 पर गिरी। ड्यूमियन फ्रेरा आउट हुए, 6ठी विकेट 135 पर। डेविड मिलर 15वें ओवर में जाकर आउट हुए और उसके बाद अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर जो 6ठी विकेट थी वो 137 के स्कोर पर गिर गई। 6ठी विकेट 135 और 7वीं विकेट माफ कीजिएगा 136 के स्कोर पर। 8वीं विकेट 141 और 9वीं विकेट 183 के स्कोर पर इस टीम ने अपनी लूज कर दी थी। तो ये सिचुएशन रही। अगर बॉलिंग को देखा जाए तो शाहीन आफरीदी ने 22 रन देकर 3 विकेटें ली। शाहीन आफरीदी पिक ऑफ द बॉलर रहे और ना सिर्फ उन्होंने ये 3 विकेटें ली बल्कि अपनी T20 क्रिकेट में उन्होंने 100 विकेटें पूरी कर ली। पाकिस्तान की तरफ से वो दूसरे बॉलर बन गए जिन्होंने T20 क्रिकेट में 100 विकेटें पूरी की। इसी तरह अब्रार अहमद ने 4 ओवर्स में 37 रन देकर 3 विकेटों को किया अपने नाम। अब्बास आफरीदी ने 4 ओवर्स में 30 रन देकर 2 विकेटें चटकाई और सुफियान मुकीम ने 4 ओवर्स में 53 रन देकर 1 विकेट को किया अपने नाम। तो ये सूरत हाल रही। यहाँ पे अब सेकंड इनिंग्स होगी और सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम की बैटिंग होगी। देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम इस मैच को जीते हुए सीरीज को 1-0 से में आगे बढ़ती है या फिर साउथ अफ्रीका की टीम जीते हुए सीरीज में आगे चलने वाली है। आप सभी ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पे सेकंड इनिंग्स की शुरुआत अब से कुछ ही लम्हात में होने जा रही है। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज 2024 का खेले जाने वाला ये पहला T20 मुकाबला, जिसमें अफ्रीका की टीम ने बड़ी ही जबरदस्त बैटिंग करते हुए अब पाकिस्तान को टारगेट दे दिया है 184 रन का। देखा जाए आज के इस मुकाबले को तो पाकिस्तान एंड टीम साउथ अफ्रीका दोनों ही इस मैच में कभी पाकिस्तान आगे जा रही थी तो कभी साउथ अफ्रीका, लेकिन डेविड मिलर और जॉर्ज लिंडे की इनिंग्स ने मुकम्मल तौर पे बदल के रख दिया इस मैच को। और अब हुआ कुछ यूं कि साउथ अफ्रीका की टीम आखिरी ओवर में 18 रन और सेकंड लास्ट ओवर में 12 रन की बदौलत, यानी कि आखिरी 2 ओवर्स में 30 रन लगाने की बदौलत टीम साउथ अफ्रीका जो स्कोर करने में अब कामयाब हुई है, उनकी तादाद 183 है और अब 184 रन का टारगेट है टीम पाकिस्तान के लिए इस मैच को जीते हुए सीरीज में 1-0 अप जाने के लिए। पाकिस्तान की टीम की बात कर ली जाए तो आज टॉस को जीता टीम साउथ अफ्रीका ने और उन्होंने टॉस को जीते हुए इस मुकाबले में बैटिंग करने का फैसला किया। इस ग्राउंड की सिचुएशन को देखते हुए अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाने की उन्होंने भरपूर तरीके से कोशिश की, क्योंकि पहली इनिंग्स में बैटिंग करते हुए जो एवरेज स्कोर रहता है वो रहता है
150 के ऊपर का और सेकंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर 135 के आसपास का रहता है। तो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 9 मैचेस और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 12 मैचेस जीते हुए हैं। तो इसलिए टीम साउथ अफ्रीका का ये डिसीजन जो कि अच्छा साबित हुआ। हालांकि लगातार उन्होंने अपनी विकेटों को अर्ली ऑन लूज किया, लेकिन फिर उसके बाद डेविड मिलर दी किलर शो स्टार्ट हुआ और डेविड मिलर की बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली आज, जिसका कोई जवाब नहीं था पाकिस्तानी बॉलर्स के पास। रिजा से 1 रन बनाकर आउट हुए, बल्कि 9 रन बनाकर आउट हुए। और जी बिल्कुल, अगर रीजा हेनरिक्स की बात इनको देखा जाए तो आज आए और गए, जिन्होंने बनाया 8 रन। रसी वैंडर डॉसन ने कोई रन नहीं बनाया। मैथ्यू ब्रिट्स ने 8 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया। डेविड मिलर ने 82 रन बना दिए और उन्होंने 40 गेंदों का सामना किया। 4 चौके और 8 बुलंदो बाला छक्के लगाए। उन्होंने 12 रन। हेनरिक लासन ने 13 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का उन्होंने लगाया। और ड्यूमियन फ्रेरा ने 7 रन बनाए 6 गेंदों पे। जॉर्ज लिंडे ने बनाए 48 24 गेंदों पे। बड़ी ही जबरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने आज के इस मुकाबले में। लास्ट तक बैटिंग करते रहे और आखिरी ओवर में 3 छक्के लगाकर उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को एक बेहतर स्कोर तक पहुंचाने में अहम रोल प्ले किया। और उसके बाद 1 रन बनाया आंदिला सेमिलेन और नकाबा पीटर ने 3 रन बनाए। 12 रन कवीना मफाका ने बनाए 11 गेंदों पे। 2 एक्स्ट्रास टीम पाकिस्तान ने फेंकी, 2 की 2 वाइड डिलीवरी थी और 1 वाइड अब्रार ने की, 1 वाइड हारिस रऊफ ने की। इस मुकाबले में टीम पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए पार्टनरशिप्स को, तो पहली विकेट 1 पर गिर गई थी, दूसरी विकेट 10 पर गिर गई थी, तीसरी विकेट 28 पर गिर गई थी। तो इब्तदाई तौर पर शाहीन और अब्रार की अच्छी बॉलिंग हमें देखने को मिली, जिसके बाद अगर बात कर लेते हैं हम तो चौथी विकेट 71 के स्कोर पर जाकर गिरी। थोड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली। हेनरिक का लासन आउट हुए, 5वीं विकेट 104 पर गिरी। ड्यूमियन फ्रेरा आउट हुए, 6ठी विकेट 135 पर। डेविड मिलर 15वें ओवर में जाकर आउट हुए। और उसके बाद अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर जो 6ठी विकेट थी वो 137 के स्कोर पर गिर गई। 6ठी विकेट 135 और 7वीं विकेट माफ कीजिएगा 136 के स्कोर पर। 8वीं विकेट 141 और 9वीं विकेट 183 के स्कोर पर इस टीम ने अपनी लूज कर दी थी। तो ये सिचुएशन रही। अगर बॉलिंग को देखा जाए तो शाहीन आफरीदी ने 22 रन देकर 3 विकेटें ली। शाहीन आफरीदी पिक ऑफ द बॉलर रहे और ना सिर्फ उन्होंने ये 3 विकेटें ली, बल्कि अपनी T20 क्रिकेट में उन्होंने 100 विकेटें पूरी कर ली। पाकिस्तान की तरफ से वो दूसरे बॉलर बन गए जिन्होंने T20 क्रिकेट में 100 विकेटें पूरी की। इसी तरह अब्रार अहमद ने 4 ओवर्स में 37 रन देकर 3 विकेटों को किया अपने नाम। अब्बास आफरीदी ने 4 ओवर्स में 30 रन देकर 2 विकेटें चटकाई और सुफियान मुकीम ने 4 ओवर्स में 53 रन देकर 1 विकेट को किया अपने नाम। तो ये सूरत हाल रही। यहाँ पे अब सेकंड इनिंग्स होगी और सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम की बैटिंग होगी। देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम इस मैच को जीते हुए सीरीज को 1-0 से में आगे बढ़ती है या फिर साउथ अफ्रीका की टीम जीते हुए सीरीज में आगे चलने वाली है। आप सभी ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पे सेकंड इनिंग्स की शुरुआत अब से कुछ ही लम्हात में होने जा रही है। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज 2024 का खेले जाने वाला ये पहला T20 मुकाबला, जिसमें अफ्रीका की टीम ने बड़ी ही जबरदस्त बैटिंग करते हुए अब पाकिस्तान को टारगेट दे दिया है 184 रन का। देखा जाए आज के इस मुकाबले को तो पाकिस्तान एंड टीम साउथ अफ्रीका दोनों ही इस मैच में कभी पाकिस्तान आगे जा रही थी तो कभी साउथ अफ्रीका, लेकिन डेविड मिलर और जॉर्ज लिंडे की इनिंग्स ने मुकम्मल तौर पे बदल के रख दिया इस मैच को। और अब हुआ कुछ यूं कि साउथ अफ्रीका की टीम आखिरी ओवर में 18 रन्स और सेकंड लास्ट ओवर में 12 रन्स की बदौलत, यानी कि आखिरी 2 ओवर्स में 30 रन्स लगाने की बदौलत टीम साउथ अफ्रीका जो स्कोर करने में अब कामयाब हुई है, उनकी तादाद 183 है और अब 184 रन्स का टारगेट है टीम पाकिस्तान के लिए इस मैच को जीते हुए सीरीज में 1-0 अप जाने के लिए। पाकिस्तान की टीम की बात कर ली जाए तो आज टॉस को जीता टीम साउथ अफ्रीका ने और उन्होंने टॉस को जीते हुए इस मुकाबले में बैटिंग करने का फैसला किया। इस ग्राउंड की सिचुएशन को देखते हुए अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाने की उन्होंने भरपूर तरीके से कोशिश की, क्योंकि पहली इनिंग्स में बैटिंग करते हुए जो एवरेज स्कोर रहता है वो रहता है 150 के ऊपर का और सेकंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर 135 के आसपास का रहता है। तो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 9 मैचेस और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 12 मैचेस जीते हुए हैं। तो इसलिए टीम साउथ अफ्रीका का ये डिसीजन जो कि अच्छा साबित हुआ। हालांकि लगातार उन्होंने अपनी विकेटों को अर्ली ऑन लूज किया, लेकिन फिर उसके बाद डेविड मिलर दी किलर शो स्टार्ट हुआ और डेविड मिलर की बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली आज, जिसका कोई जवाब नहीं था पाकिस्तानी बॉलर्स के पास। रिजा हेनरिक्स 1 रन बनाकर आउट हुए, बल्कि 9 रन बनाकर आउट हुए
और जी बिल्कुल, अगर रीजा हेनरिक्स की बात इनको देखा जाए तो आज आए और गए, जिन्होंने बनाया 8 रन। रसी वैन डॉसन ने कोई रन नहीं बनाया। मैथ्यू ब्रिट्स ने 8 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया। डेविड मिलर ने 82 रन बना दिए और उन्होंने 40 गेंदों का सामना किया। 4 चौके और 8 बुलंदो बाला छक्के लगाए उन्होंने। 12 रन। हेनरिक लासन ने 13 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का उन्होंने लगाया। और ड्यूमियन फ्रेरा ने 7 रन बनाए 6 गेंदों पे। जॉर्ज लिंडे ने बनाए 48 रन 24 गेंदों पे। बड़ी ही जबरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने आज के इस मुकाबले में, लास्ट तक बैटिंग करते रहे और आखिरी ओवर में 3 छक्के लगाकर उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को एक बेहतर स्कोर तक पहुंचाने में अहम रोल प्ले किया। और उसके बाद 1 रन बनाया आंदिला सेमिलेन और पीटर नकाबा पीटर ने 3 रन बनाए। 12 रन कवीना मफाका ने बनाए 11 गेंदों पे। 2 एक्स्ट्रास टीम पाकिस्तान ने फेंकी, 2 की 2 वाइड डिलीवरी थी और 1 वाइड अब्रार ने की, 1 वाइड हारिस रऊफ ने की। इस मुकाबले में टीम पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए पार्टनरशिप्स को, तो पहली विकेट 1 पर गिर गई थी, दूसरी विकेट 10 पर गिर गई थी, तीसरी विकेट 28 पर गिर गई थी। तो इब्तदाई तौर पर शाहीन और अब्रार की अच्छी बॉलिंग हमें देखने को मिली, जिसके बाद अगर बात कर लेते हैं हम तो चौथी विकेट 71 के स्कोर पर जाकर गिरी। थोड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली। हेनरिक का लासन आउट हुए, 5वीं विकेट 104 पर गिरी। ड्यूमियन फ्रेरा आउट हुए 6ठी विकेट 135 पर। डेविड मिलर 15वें ओवर में जाकर आउट हुए और उसके बाद अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर जो 6ठी विकेट थी वो 137 के स्कोर पर गिर गई। 6ठी विकेट 135 और 7वीं विकेट माफ कीजिएगा 136 के स्कोर पर। 8वीं विकेट 141 और 9वीं विकेट 183 के स्कोर पर इस टीम ने अपनी लूज कर दी थी। तो ये सिचुएशन रही। अगर बॉलिंग को देखा जाए तो शाहीन आफरीदी ने 22 रन देकर 3 विकेटें ली। शाहीन आफरीदी पिक ऑफ द बॉलर रहे और ना सिर्फ उन्होंने ये 3 विकेटें ली बल्कि अपनी T20 क्रिकेट में उन्होंने 100 विकेटें पूरी कर ली। पाकिस्तान की तरफ से वो दूसरे बॉलर बन गए जिन्होंने T20 क्रिकेट में 100 विकेटें पूरी की। इसी तरह अब्रार अहमद ने 4 ओवर्स में 37 रन देकर 3 विकेटों को किया अपने नाम। अब्बास आफरीदी ने 4 ओवर्स में 30 रन देकर 2 विकेटें चटकाई और सुफियान मुकीम ने 4 ओवर्स में 53 रन देकर 1 विकेट को किया अपने नाम। तो ये सूरत हाल रही। यहाँ पे अब सेकंड इनिंग्स होगी और सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम की बैटिंग होगी। देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम इस मैच को जीते हुए सीरीज को 1-0 से में आगे बढ़ती है या फिर साउथ अफ्रीका की टीम जीते हुए सीरीज में आगे चलने वाली है। आप सभी ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पे सेकंड इनिंग्स की शुरुआत अब से कुछ ही लम्हात में होने जा रही है। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज 2024 का खेले जाने वाला ये पहला T20 मुकाबला, जिसमें अफ्रीका की टीम ने बड़ी ही जबरदस्त बैटिंग करते हुए अब पाकिस्तान को टारगेट दे दिया है 184 रन का। देखा जाए आज के इस मुकाबले को तो पाकिस्तान एंड टीम साउथ अफ्रीका दोनों ही इस मैच में कभी पाकिस्तान आगे जा रही थी तो कभी साउथ अफ्रीका, लेकिन डेविड मिलर और जॉर्ज लिंडे की इनिंग्स ने मुकम्मल तौर पे बदल के रख दिया इस मैच को। और अब हुआ कुछ यूं कि साउथ अफ्रीका की टीम आखिरी ओवर में 18 रन्स और सेकंड लास्ट ओवर में 12 रन्स की बदौलत, यानी कि आखिरी 2 ओवर्स में 30 रन्स लगाने की बदौलत टीम साउथ अफ्रीका जो स्कोर करने में अब कामयाब हुई है, उनकी तादाद 183 है और अब 100 इनिंग्स की शुरुआत होने जा रही है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि प्लेयर्स अब ग्राउंड में एंटर होते हुए और एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का ये मैच जो कि अब हमें इन दोनों ही टीम्स के दरमियान देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान की टीम की तरफ से बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, इरफान खान, न्याजी, तैयब ताहिर, अब्बास आफरीदी, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम एंड अब्रार अहमद टीम पाकिस्तान की तरफ से आज हमें इन एक्शन दिखाई देंगे इस मुकाबले में, जिसमें सेकंड इनिंग्स की पाकिस्तान की बल्लेबाजी की जो शुरुआत है वो अब होने जा रही है। प्लेइंग 11 हमने आपको दोनों की बता दी हुई है और इस वक्त अगर देख लिया जाए तो प्लेयर्स अपनी अपनी पोजीशंस ले चुके हैं। पाकिस्तान की टीम के दोनों ही ओपनर्स अब अपने कदम बढ़ाते हुए पिच की तरफ आ चुके हैं और फाइनली इस मैच में अब हमें एक्शन की शुरुआत देखने को मिल जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम आए हैं बैटिंग करने के लिए और बाबर आजम का साथ देने के लिए जो प्लेयर इस वक्त में देखने को मिल जाएंगे वो रहने वाले हैं मोहम्मद रिजवान। तो साइम अयूब को नीचे धकेल दिया गया है दोस्तों और मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम मिलकर आज टीम पाकिस्तान की तरफ से हमें एज ए ओपनर इन एक्शन दिखाई देंगे। तो ये अब देखना होगा कि कैसी क्रिकेट खेली जाती है। बाबर एंड रिजवान एक बार फिर से जो कि ओपनिंग के लिए आ गए हैं टीम पाकिस्तान की तरफ से। ये अब देखना नहायत ही दिलचस्प रहने वाला है। खैर पहली गेंद लेकर बॉलर भी अपने बॉलिंग के निशान पे पहुंच गए हैं एंड अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को रिजवान फेस करेंगे पहली गेंद को। स्लिप पर फील्डर मौजूद हैं। इसके अलावा रिजवान ने 33-29 रन 92 इनिंग्स में 125 का स्ट्राइक रेट, 47 के एवरेज, 46
बार इन्होंने 30 के ऊपर का स्कोर और 104 इनका बेस्ट स्कोर है। 32 साल इनकी उम्र है, जो कि अब बैटिंग करने के लिए आए हैं। ऑन दी अदर हैंड बाबर आजम, जो कि अब T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी बन सकते हैं इस सीरीज़ में, अगर वो 40 के ऊपर का स्कोर कर देते हैं। तो बाबर आजम 40 की एवरेज है इनकी और 4000 के ऊपर रन जो है वो उन्होंने बना रखे। हाँ जी भाई, वो अपना ही चैनल है भाई अपना। सो द मैच इज़ अबाउट टू स्टार्ट। देखते हैं कि अब बनता है क्या इस मुकाबले का हाल। पहली गेंद रहेगी कबीना मफाका, जो कि अब बॉलिंग के लिए आए हैं और देखते हैं कि इनकी ये गेंदबाजी कैसी रहने वाली है। सो वी आर एब्सोल्युटली रेडी गाइज, लेट्स प्ले का इशारा करते हुए अब अंपायर। पहली गेंद साइम अयूब को एज ए ओपनर नहीं भेजा गया। रिजवान एंड बाबर ही हमें अब एज ए ओपनर देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि इस जोड़ी को, जो कि एक बार फिर से ट्राई करने का फैसला किया गया है, ये जोड़ी पाकिस्तान के लिए अब अच्छी रह पाएगी या नहीं, ये अब देखना दिलचस्प होगा। रात का ये समय है, रात का ये टाइम है और रात के इस वक्त में जितने भी दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली की गई है दोस्तों, थोड़े साइड स्क्रीन के इश्यूज़ थे जिनको सॉल्व किया गया है। साइड स्क्रीन के सामने बिल्कुल कुछ लोग जो हैं वो दौड़ते हुए गुजर रहे हैं, जिनको मना किया जा रहा है कि आप इस एरिया में ना दौड़ें, क्योंकि प्लेयर्स को देखने में फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। सो दैट्स वाई अब उनको मना कर दिया गया है दोस्तों, और उनको मना करने के बाद अब एक बार फिर से खेल की शुरुआत करने का फैसला किया गया है। इट्स टाइम फॉर बाबर एंड रिजवान। साउथ अफ्रीका में खेलते हुए 200 के ऊपर रन की पार्टनरशिप ओपनर के रूप में इन दोनों ही बैटर्स ने टीम पाकिस्तान की तरफ से लगा रखी है, जो कि अब हमें इन एक्शन दिखाई देंगे। बाबर आजम बोलते हुए देयर इज सम रिफ्लेक्शन, जी बिल्कुल दोस्तों, कुछ ना कुछ रोशनी जिसकी वजह से प्लेयर को गेंद खेलने में मुश्किलात का सामना है। वाइट कलर की ये लाइट है जो कि साइड स्क्रीन के बिल्कुल सामने देखने को मिल रही है, तो उसको अब रिजॉल्व किया जाएगा। मोहम्मद रिजवान अपना अच्छा खासा टाइम लेते हुए दोस्तों और चीज़ों को बिल्कुल तैयार करते हुए, वो किसी किस्म की डिस्टर्बेंस अपनी इस बैटिंग में चाहते नहीं है। सो दैट्स वाई उन्होंने अब बोला है कि भाई ये जो वाइट कलर की लाइट साइड स्क्रीन के बिल्कुल साइड में शो हो रही है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए तभी मैं खेलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं खेलने वाला हूं। तो इसलिए अब कह ले कि एक बार फिर से थोड़े से डिले देखने को मिला है, बहरहाल अब जल्दी से ग्राउंड स्टाफ के लोगों ने उस एरिया को जो है वो कवर कर दिया है, ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। एंड नाउ द थिंग्स आर लुकिंग एब्सोल्युटली ऑल राइट फॉर द मैच टू स्टार्ट। साइम अयूब आज ओपनिंग के लिए नहीं आए हैं, ये एक बड़ा सवाल किया जा रहा है हमसे। जी बिल्कुल, इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं है ये आपको अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। जी हाँ, इस चीज़ का हमें अभी कुछ ही देर में आइडिया मिल जाएगा कि क्यों वो ओपनर नहीं है। अगर तो आज चल गए बाबर एंड रिजवान तो यही एक रीज़न हो सकती है शायद, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इन दोनों ही प्लेयर्स का रिकॉर्ड अच्छा है एज ए ओपनर खेलते हुए, तो इसलिए शायद अब ये काम करने का फैसला किया गया है। सो दोस्तों, रिजवान कि ये जो कंसर्न है इसको अब सॉल्व कर दिया गया है और रिजवान अब अपने अंगूठे की मदद से बोलते हुए यस आई एम ऑल राइट, लेट्स प्ले। रिजवान भी बोलते हुए कि चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इस सेकंड इनिंग्स में, जिसकी शुरुआत अब बाकायदा तौर पे होने जा रही है। मफाका बॉलिंग के लिए तैयार, लेफ्ट आर्म ये बॉलर हैं जो कि अब अपनी इस बॉलिंग को कंटिन्यू रखेंगे। देखते हैं कि कैसी बॉलिंग करते हैं वो। अब पहली गेंद लेकर बॉलर हैं तैयार। थोड़ा सा डिले हमें देखने को मिला था, लेकिन अब मैच की शुरुआत बाकायदा तौर पे होते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट एक स्लिप के साथ करवाई गई ये गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है बल्लेबाज ने, और बल्कि लीव करते हुए जाने दिया है बैटर ने। विकेट कीपर के दस्तानों में कोई भी रन नहीं आया। वन शुड लुक एट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द बाबर आजम। जी बिल्कुल, बाबर आजम की हालिया फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अब टीम मैनेजमेंट की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि अब तो वो कप्तान भी नहीं है भाई। इससे पहले वो कप्तान थे, तो इसलिए उन पे मलबा डाला जाता था कि भाई वो कप्तान है, तो इसलिए वो अब खुद ओपनर आते हैं। भाई अब तो वो कप्तान भी नहीं है। नाउ इट्स टाइम कि टीम मैनेजमेंट से ये सवाल किया जाए। खैर, हालांकि साइम अयूब अगर ओपनर आते तो ये एक अच्छी चीज रहती। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद मोहम्मद रिजवान के लिए गेंद, दो ब्यूटीफुल डिलीवरी ऑफ स्टंप के काफी बाहर की ये गेंद थी। इस गेंद को अपनी जगह पे खड़े खड़े ऑफ साइड में खेलने के लिए गए, बल्ले का इनसाइड एज लगा और ये गेंद गई है लेग साइड में। अच्छी गेंद थी ये, और बोल्ड आउट होते होते बच गए। इस पावर प्लेयर नाम है जिनका मोहम्मद रिजवान, और इसी के चलते हुए अब स्कोर है 0। 2 गेंदों के बाद 0 स्कोर टीम पाकिस्तान
बिना किसी विकेट के नुकसान। आपकी फेवरेट है इन दोनों में से कौन सी टीम, जरा इस मुतालिक भी दीजिएगा हमें बताएं। यहां पर मोहम्मद रिजवान फाइनली अपना बल्ला चलाते हुए इस गेंद को जिन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन ये गेंद उनके पैड्स पे टकरा कर गई है फाइन लेग रीजन में 4 रन के लिए। तो चौका मिलते हुए टीम पाकिस्तान को बाउंड्रीज की जरूरत होगी अर्ली ऑन, अशद जरूरत होगी टीम पाकिस्तान को अर्ली ऑन बाउंड्रीज की, क्योंकि टारगेट अच्छा खासा है। पाकिस्तान की टीम अगर टाइम ले गई तो फिर उनके लिए टारगेट अचीव कर पाना काफी मुश्किल काम होने वाला है। डाउन द लेग साइड ये गेंद थी जिसे कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड में खेलने की कोशिश में थे, लेकिन ये गेंद पैड्स पे टकरा कर गई है। अब 4 रन के लिए सामना करेंगे एक बार फिर से मोहम्मद रिजवान, जो कि सामने मौजूद बॉलर है। तैयार आए गेंद, क्या इस गेंद को खेल दिया है। इस बार ये गेंद बल्ले से निकली है मोहम्मद रिजवान के कवर्स के एरिया में, इस गेंद को खेला, पीछे कोई फील्डर नहीं, और इस चीज का भरपूर अंदाज से फायदा होते हुए टीम पाकिस्तान को गेंद जा टकराई है पॉइंट बाउंड्री लाइन से 4 रन के लिए। उम्दा शॉट खेलते हुए इस बार रिजवान एक कप्तानी वाली इनिंग्स खेलते हुए उनको अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ना होगा। जी बिल्कुल, फखर जमान को भी लाइव चैट में जो दोस्त हैं वो मिस करते हुए, वेयर इज फखर जमान। जी बिल्कुल, फखर जमान को टीम में अब नहीं रखा गया, उम्मीद करेंगे कि अगली सीरीज में वो आ जाएंगे, लेकिन इस सीरीज में उनको होना चाहिए था। खैर फखर जमान अब मौजूद हैं, नए प्लेयर्स को ट्राई आउट करने का फैसला किया गया। इस गेंद को खेलते हुए मोहम्मद रिजवान ने ऑफ साइड में कवर्स के एरिया में तेजी के साथ दौड़ते हुए सिंगल को पूरा कर लिया है। सिंगल के साथ 5 गेंदों पे 9 रन बन गए अब टीम पाकिस्तान के। बाबर आजम की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लगी हुई है, तो इसलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि बाबर आजम की ये बल्लेबाजी अब रहती है कैसे, और क्या वो अपनी इस फॉर्म को अच्छे से मेंटेन करते हुए क्या अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, अब देखना दिलचस्प रहने वाला है। इट्स पाकिस्तान हु इज बैटिंग एट दिस मोमेंट। यहां पर बाबर आजम बने हुए स्ट्राइकर एंड पे ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद बाबर के लिए, अपील हुई एलबीडब्ल्यू की, लेकिन नॉट आउट का सिग्नल, और थर्ड अंपायर के पास जाने का फैसला किया है टीम साउथ अफ्रीका ने। और कैच की अपील हुई है दोस्तों, कैच की अपील, और थर्ड अंपायर के पास जाने का फैसला किया गया है। बाबर आजम की किस्मत अब देखते हैं कि उनका साथ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, अब देखना दिलचस्प होगा। थर्ड अंपायर इस चीज को अब जज करेंगे, देखना दिलचस्प होगा कि बाबर आजम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, करीबी मामला भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं कि बनता है क्या। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। टीम साउथ अफ्रीका तो काफ़ी श्योर दिखाई दे रही है कि, और इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे रिव्यू ले लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम के बाबर आजम जिनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लगी हुई, उनको अब एज ए ओपनर भेज दिया गया। डाउन द लेग साइड ये गेंद थी, और देखना दिलचस्प होगा कि यह गेंद कहीं बल्ले से टकराई है या फिर जाते जाते ये गेंद थाई पैड से टकरा कर गई है। अब डिसाइड करेगी ये चीज के प्लेयर आउट है या नहीं है। तो दोस्तों अल्ट्राएज जाते हुए, और अल्ट्राएज की मदद से देखा जा सकता है कि ये गेंद वो करीबी मामला था, यह गेंद बल्ले को मिस करते हुए थाई पैड से टकरा कर गई है अब विकेट कीपर के पास। तो इसलिए सरवाइव करते हुए डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद पर बाबर आजम। पहले ओवर में 9 रन है टीम पाकिस्तान बिना किसी विकेट के नुकसान। अंपायर का ये डिसीजन अब मेंटेन रहते हुए, जी हाँ, अंपायर का ये डिसीजन अब मेंटेन रहते हुए। सो द स्कोर इज 9 टीम पाकिस्तान। पहले ओवर में 9 बन गए हैं पाकिस्तान के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 9.25 के आसपास का है। 9 बन गए, 9.25 बनाने हैं। हर ओवर में टीम पाकिस्तान को जो रन लगाने होंगे वो 9 के आसपास ही लगाने होंगे, यानी कि पाकिस्तान को पावर प्ले में 50 के ऊपर का स्कोर अब हर हाल में बनाना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर पावर प्ले में पाकिस्तान की टीम एक बेहतर स्कोर बनाती है, देन दे हैव एनी चांसेस टू स्टे इन दिस मैच। अदरवाइज उनके लिए बने रह पाना इस मुकाबले में इतना आसान काम नहीं होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यही सवाल हमारा आपसे है कि आपकी नज़र में पावर प्ले में ये टीम बनाएगी कितने रन को, जरा इस मुतालिक भी दीजिएगा आप हमें बता। मोहम्मद रिजवान बने हुए स्ट्राइकर एंड पे ओवर के गेंद को जिन्होंने खेल दिया है डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद को फाइन लेग के इलाके में 4 रन के लिए। तो इंपॉर्टेंट चौका मिलते हुए टीम पाकिस्तान को डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद को खेला। अब देखना होगा कि बल्ले से निकली ये गेंद या पैड से। तो दोस्तों ये गेंद पैड्स पे टकरा कर गई है 4 रन के लिए। तो 2 लेग बाइज की सूरत में चौके मिलते हुए टीम पाकिस्तान को 13 रन टीम पाकिस्तान बिना किसी विकेट के नुकसान। बैट्समैन अब बॉलिंग के लिए आए हैं जो कि राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलर हैं, स्ट्रॉन्ग बॉलर दिख रहे हैं जो कि दौड़ते हुए आए। गेंद क्या ये गेंद जो कि बहुत ही स्पीडी गेंद थी डाउन द लेग साइड। ये गेंद वाइड बॉल का सिग्नल दिया है अब अंपायर ने।
तो बड़ी ही स्पीडी बॉलिंग की जा रही है। इससे पहले लेग बाइस की सूरत में चौका मिला था टीम पाकिस्तान को और ये गेंद बड़ी ही स्पीड से निकली और बल्ले और पैड्स को मिस करते हुए गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर 14 है टीम पाकिस्तान बिना किसी विकेट के नुकसान। 1 ओवर और 1 गेंद का खेल अब हो चुका है पूरा। दिल से शुक्रिया आपका बने रहने के लिए। बैट्समैन दौड़ते हुए आए, गेंद किया इस गेंद को मोहम्मद रिजवान ने डाउन द ग्राउंड खेला, बड़ी ही मुहतात अंदाज से खेला, कोई भी रन इस गेंद पे नहीं आया। दूसरी गेंद पे कोई रन नहीं बना। पाकिस्तान की टीम की ये कोशिश होगी कि वो पावर प्ले में 50 के ऊपर का स्कोर बनाए। हमारा आपसे ये सवाल कि क्या पाकिस्तानी टीम पावर प्ले में 50 रन को बना पाएगी या नहीं। 142 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करते हुए डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 13 रन पे जाना चाहिए था टीम पाकिस्तान का स्कोर। बारिश के इम्कानात भी हैं दोस्तों इस मुकाबले में, तो डकवर्थ लुइस मेथड के तहत ये चीज़ भी टीम पाकिस्तान के जहन में होनी चाहिए कि अगर बारिश आ गई तो फिर उनको अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर वो टाइम ले गए तो फिर उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दे नीड टू गो वेल। बारिश के इम्कानात हैं। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 14 रन होने चाहिए थे टीम पाकिस्तान के और 14 पे ही ये टीम इस वक्त मौजूद है। चौथी गेंद रहेगी 20 ओवर की। मोहम्मद रिजवान कप्तान और कप्तानी वाली इनिंग्स खेलने की उनको रिक्वायरमेंट होगी आज। बॉलर तैयार, आए गेंद किया, ये गेंद जो कि स्टंप्स की लाइन में थी इस गेंद को खेल दिया है। रन आउट का चांस मिस करते हुए, जी हां एक गोल्डन चांस। बाबर आजम आउट होते होते बाल बचे हैं। ओवर थ्रो की सूरत में रन दौड़ते हुए वो हिम्मत हार गए थे। उनको ये लगा कि वो यकीनन आउट है, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। सिंगल दौड़ना चाहते थे, मोहम्मद रिजवान ने बीच रास्ते मना कर दिया। फील्डर जो कि ऑफ साइड में मौजूद थे उनकी तरफ से हुई हल्की सी मिसफील्डिंग, गेंद को विकेटों में नहीं दे मार पाए वो। तो ओवर थ्रो की सूरत में रन को तो दौड़ लिया, लेकिन दिल एक बार मुंह में जरूर आ गया होगा बाबर का। 15 रन टीम पाकिस्तान, 1 ओवर और 4 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। 5वीं गेंद रहेगी 20 ओवर की, जिसे बाबर ने विकेटों में आती हुई गेंद को बैट एंड पैड को साथ मिलाते हुए खेल दिया है। वापस बॉलर के पास कोई भी रन अब लेने का मौका मौजूद नहीं है। साउथ अफ्रीका की जो चीज़ हमें अच्छी लगी थी इस मुकाबले में वो ये थी कि भले टीम साउथ अफ्रीका इस मुकाबले में विकेटों को लूज करती जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने रन्स को बड़ी ही स्पीड से स्कोर कर रही थी। बहरहाल आखिरी गेंद रहेगी 20 ओवर की। अभी तक ये ओवर टीम साउथ अफ्रीका के लिए कमाल चलते हुए। ओवर की अगली गेंद को बाबर आजम ने स्मैश करने की कोशिश की, ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन यह गेंद बल्ले के किनारे को मिस करते हुए गई है विकेट कीपर के पास। बाबर का कॉन्फिडेंस लेवल अभी इतना हाई नहीं है, उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लगी हुई है खासतौर पे T20 क्रिकेट में, तो इसलिए उनके लिए अब शुरुआत में उनको भेजना आई डोंट नो कि एक अच्छा आइडिया था या नहीं था। बहरहाल अब वो एज ए ओपनर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो देखते हैं कि कैसी बैटिंग की जाएगी उनकी तरफ से आज के इस मुकाबले में। साइम अयूब, उस्मान खान, तैयब ताहिर, इरफान खान, अब्बास आफरीदी, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम एंड अब्रार अहमद। तो ये टीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है जो कि आज के इस मुकाबले में हमें इन एक्शन दिखाई दे रही है। तो ये टीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अगले ओवर की रहेगी। शुरुआती गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद मफाका की गेंद जिसे कवर्स के एरिया में ड्राइव किया, लेकिन कोई भी रन इस गेंद पे नहीं आया। सीधा कवर्स के एरिया में मौजूद फील्डर तक गई है गेंद, जिन्होंने किया इस गेंद को फील्ड। सो नो रन ऑन दिस डिलीवरी। डॉट के चलते हुए 15 रन टीम पाकिस्तान, 2 ओवर और 1 गेंद का खेल अब हो चुका है पूरा। 13 गेंदों पे 15 रन रिक्वायर्ड रन रेट ऑलरेडी 9.5 के हो चुका है। 9 के आसपास का होते हुए दोनों को ओपनर आना बेवकूफ़ी है। सईद हसन भाई का ये कहना है भाई रिजवान की तो समझ आ रही है क्योंकि उन्होंने पिछली सीरीज में भी ओपनिंग की थी। बाबर आजम अगर नंबर 3 पर भी बैटिंग करने के लिए आ जाएं तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी मेरी नज़र में। बहरहाल उनको अब एज ए ओपनर भेजा गया है, तो देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम के जो मुकासद हैं उनको एज ए ओपनर भेजने के वो क्या पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, अब देखना दिलचस्प होगा। बारिश के इम्कानात भी हैं। पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड वाले मामले को भी जहन में रखकर बैटिंग करनी चाहिए। बहरहाल सामना करेंगे बाबर आजम, स्ट्राइकर एंड पे मौजूद। ओवर की अगली गेंद, बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और आउट हो गए। इस गेंद को ऑफ साइड में उड़ाने की कोशिश में थे, टॉप एज हुए, गेंद हवा में रही और गेंद हवा में रहते हुए सीधा डीप थर्ड मैन एरिया में गई है और इस तरह 0 के स्कोर पर आउट होकर लौटते हुए वापस बाबर आजम। दैट्स इट। जिनका इंतजार करते हुए फैंस को
महीने गुजर गए जिनका इंतजार करते हुए फैंस को, काफी दिन गुजर गए। वो आए और आते ही उन्होंने कहा कि भाई मेरा इंतजार आप क्यों कर रहे थे भाई, और आउट हो गए हैं दोस्तों वो। दैट्स इट, फर्स्ट वन डाउन फॉर टीम पाकिस्तान। बहुत ही ब्रिलियंट कैच लिया है डीप थर्ड मैन के एरिया में मौजूद फील्डर ने। अगर आप ओपनर वाले बंदे को ओपनर नहीं भेजेंगे तो यही होगा। बाबर आजम आउट होकर लौटते हुए वापस, अनदर फेलियर जो कि उनकी तरफ से हमें देखने को मिला, जिनसे बहुत ज्यादा टीम पाकिस्तान और उनके फैंस को उम्मीदें थी कि बाबर आजम आज चलेंगे, बाबर आजम आज रन्स बनाएंगे, लेकिन वो आकर अपने फैंस को थोड़े मायूस करते हुए। नए आने वाले प्लेयर हैं साइम अयूब। पावर प्ले की 15 कीमती गेंदें जाया करते हुए टीम पाकिस्तान, 15 कीमती गेंदों को जाया करने के बाद अब आए हैं साइम अयूब। अच्छा होता कि अगर ये ओपनर आते, क्योंकि ओपनिंग करना ये पसंद करते हैं और एज ए ओपनर ही टीम में खेलते हैं। ये डॉट के स्कोर पर, 0 के स्कोर पर वो आउट हुए। बाबर आजम के आउट होने के बाद अब पाकिस्तान की टीम का रन रेट आप देख लें 6.40 का। इतना बड़ा स्कोर अगर आप चेज करेंगे तो इतने रन्स अगर आप बनाएंगे पावर प्ले के उन ओवर्स में, और साथ में आप अपनी विकेटों को भी लूज करेंगे, देन यू डोंट हैव एनी चांसेस टू विन द मैच। अनायत खान भाई बोलते हुए कि ये तो टेस्ट मैच लग रहा है। जी बिल्कुल, अभी तक पाकिस्तान की टीम की मायूस कुन क्रिकेट का सिलसिला जारी है। सामना करेंगे गेंद का अब बल्लेबाज साइम अयूब, आते ही जिन्होंने इस गेंद को, यॉर्कर गेंद को खेल दिया पॉइंट एंड कवर के एरिया में। अच्छा शॉट साइम के बल्ले से 1 रन का होते हुए इजाफा और दूसरे के लिए भी वापसी करते हुए। क्रिकेट शॉर्ट्स रील ने में ज्वाइन किया है, वेलकम टू दी लाइव एज वेल। पाकिस्तान की टीम के क्या आपकी नजर में कोई थोड़े बहुत चांसेस मौजूद हैं इस मुकाबले में या नहीं, इस मुतालिक भी दीजिएगा आप हमें बता। पावर प्ले में 50 की मांग की जा रही थी, लेकिन जैसी शुरुआत की गई है टीम पाकिस्तान की तरफ से, अब 50 बनाना काफ़ी मुश्किल काम लग रहा है टीम पाकिस्तान की तरफ से इस मुकाबले में। अगला मुकाबला 13 तारीख को और उसके बाद अगला मुकाबला 14 को होने वाला है। 2 दिनों में 2 मैचेस खेले जाएंगे। एक और शॉर्ट पिच गेंद, स्विंगिंग डिलीवरी पड़ते हुए बाहर की तरफ निकली है गेंद, जिससे खेलने की कोशिश में थी लेकिन नाकाम रही है प्लेयर, और गेंद बल्ले के बिल्कुल पास से गुजरते हुए गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट, 18 पे 1, 2 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। कल को खेलेगी टीम जिम्बाब्वे और टीम अफगानिस्तान T20 मुकाबले में। कल शाम के वक्त वो मुकाबला खेला जाएगा। 18 पे 1 टीम पाकिस्तान, 2 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। साइम अयूब ने 2 बना रखे हैं। साइम अयूब ओवर की आखिरी गेंद को फेस करेंगे। ओवर की अगली गेंद को कवर के एरिया में खेलने की कोशिश में साइम अयूब, लेकिन यह गेंद बल्ले का किनारा मिस करते हुए गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। अफ्रीका ऑन टॉप एट दिस मोमेंट। ये वही अफ्रीका की टीम है जिनको पिछली सीरीज में इंडियन टीम ने 2-2 कर बकरा बना दिया था, और अब आप देख सकते हैं पाकिस्तान की टीम ने उनको फिर से हीरो बनाने का फैसला कर लिया है, बिकॉज पाकिस्तानी टीम कोई किसी किस्म की इंटेंट दिखा नहीं रही है। T20 क्रिकेट नाम की ही खेलते हुए टीम पाकिस्तान, जहाँ पे उनको अब थोड़ी एग्रेसिवनेस दिखाने की ज़रूरत बरहल आते ही वो अपनी विकेटों को भी लूज़ कर रहे हैं, और 3 ओवर्स में 18 रन अभी तक बनाए हुए हैं। साउथ अफ्रीका की टीम ने भी नो डाउट शुरुआत में अपनी विकेटों को लूज़ ज़रूर किया, लेकिन अफ्रीका की टीम की जो काबिल तारीफ चीज़ थी वो ये थी कि वो रन्स को बना रहे थे। उनका रन रेट 10 के आसपास का चल रहा था। डेविड मिलर ने आकर बड़ी ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली थी, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो वो, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो इब्तदाई बल्लेबाज हैं, लाइक अगर बाबर को देखा जाए, रिजवान को देखा जाए, इसके अलावा साइम अयूब को देखा जाए, उस्मान खान और तैयब ताहिर, ये वो प्लेयर्स हैं जिनका स्ट्राइक रेट 130 के आसपास का, बल्कि 130 से भी कम का है। तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत टीम पाकिस्तान को। T20 की एक बेहतर टीम थी ये, लेकिन अब थोड़ा डाउनफॉल चलते हुए टीम पाकिस्तान का T20 क्रिकेट में। दूसरी गेंद रहेगी अभी इस ओवर की। इस गेंद को संभलते हुए खेल दिया लेग साइड में, कोई भी रन लेने का मौका मौजूद नहीं है। आई थिंक पाकिस्तानी टीम को एक अग्रेसिव कोच की ज़रूरत है जो कि उनको बताए कि भाई T20 क्रिकेट होती क्या है। 5 मैचेस में 3 विकेटें, और अब इस प्रेशर सिचुएशन से निकलने का एक ही हल है कि आप अटैक करें, और अटैक करेंगे तो विकेट फिर भी गिर सकती है। 13 गेंदों पे 7 रन अब कौन सी क्रिकेट में खेले जाते हैं मुझे अब आइडिया नहीं।
बाउंड्रीज बहुत छोटी, स्क्वायर की बाउंड्रीज 65 मीटर के आसपास की हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की टीम कम बैक करने की कोशिश में, जो भी हो जाए, लेकिन ये जो कीमती गेंदें इनको जाया कर दिया है। ओवर के लिए गेंद को संभलते हुए खेल दिया लेग साइड में, फाइनल एरिया में गई ये गेंद, 1 रन का होते हुए फिर से इजाफा। सिंगल के साथ 19 पे 1, 3 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा। फखर जमान टीम में शामिल नहीं, आसिफ अली टीम में शामिल नहीं है। फखर जमान को तो होना चाहिए था, लेकिन उनके बारे में जो राय दी गई दोस्तों वो भी थोड़ी हैरान कुन थी मेरी नज़र में, कि भाई वो अनफिट हैं, वो फिट नहीं है इसलिए वो नहीं खेल रहे। एक जानिब ये कहा गया कि वो फिट नहीं है इसलिए नहीं खेल रहे, और दूसरी जानिब वो पाकिस्तान का जो इस वक्त पाकिस्तान कप का टूर्नामेंट चल रहा है वहाँ पे खेल रहे हैं। सामना करेंगे इस गेंद का, बल्लेबाज नाम है जिनका साइम अयूब, इस गेंद को जिन्होंने पुल करते हुए खेल दिया है लेग साइड में 4 रन के लिए। साइम अयूब जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश में है और हिम्मत दिखाते हुए, बात होती है हिम्मत की, और साइम अयूब ने हिम्मत दिखानी है, जो मर्जी हो जाए, भले वो आउट हो जाएं, भले वो खेलते रहें, लेकिन वो खेलेंगे अपने अंदाज से। 23 पे 3 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल हो चुका है पूरा। ही विल डेफिनेटली नॉट वेस्ट एनी डिलीवरीज हियर, वो गेंदों को बिल्कुल भी जाया करेंगे नहीं। सामना करेंगे इस गेंद का, एक बार फिर से साइम अयूब, अच्छा शॉट साइम के बल्ले से, इस गेंद को फुल टॉस बनाकर खेल दिया कवर्स के एरिया में 4 रन के लिए। यह हुई ना बात, साइम अयूब मैच में थोड़ी जान डालते हुए पाकिस्तानी फैंस के लिए। 2 गेंदों पे 2 चौके, 9 रन ऑलरेडी इस ओवर में आ गए हैं। हमारा आपसे सवाल कि पावर प्ले में बनाएगी ये टीम कितने रन्स को। स्ट्राइक रेट शुड बी अप एंड ओवर। जी बिल्कुल, इतना बड़ा टारगेट जब आप चेज कर रहे हो तो आपको तेज क्रिकेट ही खेलनी चाहिए, और तेज क्रिकेट खेलेंगे तो ही आपकी बचत हो पाएगी। चौकों की सूरत में अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए प्लेयर सामना करेंगे इस गेंद का। साइम अयूब 10 के स्कोर पर वो मौजूद हैं। लास्ट डिलीवरी रहेगी अब इस ओवर की। क्राउड की एक अच्छी तादाद स्टेडियम में मौजूद होकर इस मैच को एंजॉय करते हुए यहां पर साइम अयूब इस चीज को इंश्योर करते हुए कि वो क्राउड को एंटरटेन करें। इस गेंद को उड़ा दिया उन्होंने इस बार डीप थर्ड मैन एरिया में। 2 टप्पे लगते हुए यह गेंद जा टकराई है बाउंड्री लाइन से 4 रन के लिए। वाह वाह वाह, 13 रन इस ओवर में आ गए। पाकिस्तान के लिए जितनी बुरी शुरुआत हुई थी इस ओवर की, उतनी ही अच्छी इख्तितामी होते हुए साइम अयूब की इस बैटिंग को देखा जाए तो पहली 3 गेंदों पे 1 रन बना रिजवान के बल्ले से, और अगली 3 गेंदों पे 12 रन बने साइम अयूब के बल्ले से। 6 गेंदों पे 14 रन बना दिए अब तक उन्होंने। फास्ट बॉलर अब आ चुके हैं बॉलिंग के लिए। नाम है जिनका बार्टमैन, और अच्छी क्रिकेट खेलने की ये भी काबिलियत रखते हैं बार्टमैन, जिनकी बॉलिंग का सामना करेंगे मोहम्मद रिजवान। सामने है वो मौजूद। ओवर की पहली ही गेंद, और इस गेंद को उड़ा दिया है इस बार मोहम्मद रिजवान ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए डाउन द ग्राउंड। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ते हुए चौका मिल गया है मोहम्मद रिजवान को। They need to show some intent। बाउंड्रीज इतनी बड़ी नहीं है तो पाकिस्तान की टीम को अब हिम्मत दिखानी होगी दोस्तों, हर हाल में हिम्मत दिखाएंगे तो फायदा होगा, हिम्मत दिखाएंगे तो मैच को जीत पाएंगे। अदरवाइज अफ्रीका की टीम इस मैच को जीतते हुए सीरीज में 1-0 अप जा सकती है। सो दैट्स व्हाई दे नीड टू प्ले फास्ट हियर। 35 पे एक टीम पाकिस्तान, 4 ओवर्स और 1 गेंद का खेल अब हो चुका है पूरा। सामना करेंगे मोहम्मद रिजवान, बॉलर हैं तैयार, दौड़ते हुए आए, गेंद किया, इस गेंद को हल्का सा ऑफ साइड में शफल करते हुए मिड विकेट के एरिया में खेलने की कोशिश में थे ये प्लेयर, लेकिन बल्ले का इनसाइड एज लेते हुए गेंद मिड विकेट के एरिया में गई है। पिछली 4 गेंदों पे 4 लगातार चौके मिलते हुए टीम पाकिस्तान को। दे आर डेफिनेटली ट्राइंग टू मेक सम काइंड ऑफ कमबैक हियर। 35 पे 4 ओवर्स और 2 गेंदों के खेल के बाद क्या पावर प्ले में 50 होंगे या नहीं होंगे। पावर प्ले में 10 गेंदें बाकी हैं, 10 गेंदों पे 15 रन की जरूरत होगी टीम पाकिस्तान को अपने 50 पूरे करने के लिए। तो हमारा आपसे सवाल है कि क्या पावर प्ले में ये टीम 50 रन को पूरा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। सामना करेंगे गेंद का बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद, इस गेंद को मोहम्मद रिजवान ने पुल किया और पुल करते हुए मिड विकेट के एरिया में खेलकर सिंगल ले लिया है। 2 ही फील्डर लेग साइड में मौजूद थे, एक फील्डर स्क्वायर लेग और एक फील्डर मिड विकेट की पोजीशन पर मौजूद। तो 1 रन का हुआ है इजाफा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इस इनिंग्स में अभी तक 70 दोस्तों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है भाई साहब। 5वां ओवर है और सिर्फ 70 बंदों ने सब्सक्राइब किया हुआ है अभी तक इस इनिंग्स में। वीडियो के नीचे जाएंगे तो काले या सफेद रंग का सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा, उसको दबाते हुए घंटी के निशान को दबाएंगे तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। साइम अयूब इज ऑन स्ट्राइक, बॉलर है बैट्समैन, दौड़ते हुए आए गेंद, क्या अच्छा गेंद, बड़ी ही स्पीड से करवाई गई है गेंद और अच्छी तेज बॉलिंग करते हुए बैट्समैन जिनकी गेंद को डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश की। बल्ले का इनसाइड एज लेते हुए गेंद गई है वापस बॉलर के पास, सो नो रन ऑन दिस डिलीवरी। इट्स 36 टीम पाकिस्तान फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट्स। पाकिस्तान के बॉलर्स की एवरेज स्विंग की बात कर लेते तो वो 0.5 डिग्रीज थी। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की एवरेज स्विंग की बात कर लेते तो 1.1 डिग्रीज की स्विंग के साथ बॉलिंग करते हुए बैट्समैन जो कि अब फील्डिंग में तब्दीली करने के साथ अपनी बॉलिंग को रखेंगे कंटिन्यू। ओवर की अगली गेंद लेकर जिन्होंने दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद किया और इस गेंद पर एक और बड़ा ही खूबसूरत शॉट दे मारा है साइम अयूब ने, जिन्होंने गेंद को डाउन द ग्राउंड हिट किया। ज्यादा जोर से उन्होंने इस गेंद को हिट किया नहीं बल्कि मिडल ऑफ द बैट खेला इस गेंद को और बिना किसी दिक्कत और परेशानी के खेलते हुए लगा दिया है ये एक बड़ा ही क्लासिकल चौका। तो साइम अयूब अपनी क्लास शो करते हुए वो बताते हुए कि क्यों समझदारी भी जरूरी होती है क्रिकेट में। चौका देखने को मिला है 40 पे, एक 7 गेंदें 10 रन चाहिए पाकिस्तान को 50 क्रॉस करने के लिए पावर प्ले में। तो देखते हैं कि पावर प्ले में ये टीम 50 को बना पाएगी नहीं बना पाएगी। सामना करेंगे इस आखिरी गेंद का बल्लेबाज साइम अयूब, बॉलर है बैट्समैन, दौड़ते हुए आए, गेंद किया, अच्छा गेंद इस बार बैट्समैन की तरफ से जिसे साइम ने लेग साइड में उड़ाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद की बॉडी से टकराई और बॉडी से टकरा कर ये गेंद गई है ऑफ साइड में। कोई भी रन इस गेंद पे नहीं आया, बॉडी से ये गेंद साइम अयूब के टकराई थी काफी जोरदार तरीके से, जिसकी वजह से तकलीफ में दिखाई दिए साइम अयूब, उनके सीने पे ये गेंद जाके टकराई थी। तो उम्मीद करेंगे कि वो सही रहे और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बहरहाल एक बार टीम के डॉक्टर आएंगे और आकर उनको चेकआउट करेंगे, इज ही ऑल राइट और नॉट। क्लासिक नहीं, क्लासिक 4 ओके हो गया परवेज भट्टी भाई, शुक्रिया आपका हमारी दुरुस्ती करने के लिए, थैंक यू सो मच। पल वही सर लास्ट वाली लाइव पे आ जाएं, अरुण भाई, अरुण कुमार आप भी वहाँ पे आ जाइए। अरुण कुमार सर मैं आपको लिंक दे देता हूँ ताकि आपके कमेंट्स लिए जा सके। बहरहाल अगर देख लिया जाए तो ये वाला लिंक मैंने आपको लाइव चैट में दे दिया, वहाँ पे आ जाइएगा आप। सो दोस्तों देखा जाए तो नकाबा पीटर स्पिन गेंदबाज है जो कि अब बॉलिंग के लिए आ चुके हैं। ख्वाजा नाफियों में अरबिन यूसुफ मस्ट बी इंक्लूडेड। मुझे लग रहा है अपना सईद सर के ये जो अभी PSL होगा पाकिस्तान में उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए जाएंगे। नकाबा पीटर आ चुके हैं बॉलिंग के लिए, अपने ओवर की पहली गेंद लेकर आए। गेंद क्या, इस गेंद को मोहम्मद रिजवान ने संभलते हुए वनडे अंदाज में मिड विकेट के एरिया में खेलकर 1 रन को दौड़ लिया है। सिंगल के इजाफे के साथ अब स्कोर रहते हुए यहाँ पर 41 टीम पाकिस्तान, एक खिलाड़ी के नुकसान, 5 ओवर और 1 गेंद का खेल अब हो चुका है पूरा। पावर प्ले में 50 रन बनाने की कोशिश में होगी टीम पाकिस्तान। देखते हैं कि साइम अयूब स्पिन बॉलर को किस अंदाज से कह के वो रुकेंगे, बिल्कुल नहीं, वो यकीनन बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे और हमारी इस प्रेडिक्शन को वो अब बेहतरीन अंदाज से पूरा करते हुए एक बड़ा ही शानदार चौका बैकफुट पर जाकर बिना रिस्क लिए इस गेंद को उन्होंने कवर्स के एरिया में खेल दिया है। टाइमिंग और प्लेसमेंट बड़ी ही लाजवाब करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया है साइम अयूब ने। क्या आज वो दिन है कि साइम अयूब अपनी पहली हाफ सेंचुरी लगाएंगे T20 क्रिकेट में। 49 का उनका बेस्ट स्कोर है T20 क्रिकेट में, जो कि अब अपनी इस बैटिंग को कंटिन्यू रखे हुए आगे बढ़ते हुए। जी बिल्कुल अरुण सर आप सही वाली लाइव पे आ गए। यार मेरे गले को क्या हुआ, आई थिंक ठंडा पानी पीने की वजह से गला बेचारा अब ना थोड़ा अनईजी फील कर रहा है। गर्म वाला पानी खत्म हो गया था मेरे पास से। तो ओवर के लिए गेंद को एक बार फिर से बल्लेबाज ने खेल दिया लेग साइड में और मिड विकेट के एरिया में खेलते हुए 1 रन को पूरा किया। दूसरे के लिए भी लौटना चाहते थे साइम, लेकिन मना किया है उनके साथी प्लेयर ने दूसरा रन लेने से, हालांकि दूसरा बनता था भाई। सिंगल का इजाफा हुआ, इसी सिंगल के चलते हुए 40 पे 3 गेंदें भी पावर प्ले में होनी है बाकी। साइम अयूब अब नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद है, मोहम्मद रिजवान अब स्ट्राइकर एंड पे मौजूद है। देखते हैं कि वो थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। मोहम्मद रिजवान जिन्होंने इस गेंद को लेग साइड में खेला, मिड विकेट के एरिया में खेला और मिड विकेट के एरिया में खेलते हुए 1 रन को दौड़ लिया। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के एरिया में खेलते हुए सिंगल को दौड़ लिया है। इस सिंगल के चलते हुए 47 पे 5 ओवर और 4 गेंदों का खेल अब हो चुका है पूरा।
इस मौसम में ठंडा पानी कौन पीता है? नहीं, ठंडा नहीं, नॉर्मल जो पानी होता है, नॉर्मल पानी आजकल ठंडा ही होता है। 5वीं गेंद रहेगी अभी इस ओवर की। 50 की प्रिडिक्शन हमारी पावर प्ले की, जो कि अब लगभग पूरी होने को है, और 50 रन को क्रॉस करते हुए साइम अयूब इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को बना के रखने की अब भरपूर कोशिश में है। इस गेंद को जिन्होंने पुल किया, लेग साइड में खेला और स्क्वायर लेग एरिया में खेलते हुए लगा दिया है। ये एक बड़ा ही खूबसूरत और लाजवाब चौका, और इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 51। एक खिलाड़ी के नुकसान भी स्क्वायर लेग एरिया को उन्होंने टारगेट किया और लगा दिया है। ये एक बेहतरीन चौका। Hit at the top of its bounce and it's through the offside. 11 runs already. 4 runs, big one to finish the power play. 15 off. It's 55 for 1. कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। हेड एंड शोल्डर्स अब 100 रुपए की बचत के साथ, जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। अब सिर्फ 800 रुपए में। He's got all the shots, Saim Ayub, and that was to finish it off. Well ahead in terms of where they need to be. Yes, a great start this for Pakistan. 55 for 1. South Africa deciding to go to Simalani. Change of ends for him. Yeah, Ramis, I think the impressive thing is Saim Ayub hasn't really taken any risks, has he? I mean, he's just hit the 7 fours, but hasn't really had to hit the ball in the air, and is striking at 240. Yeah, he's that kind of a player who can play conventional cricket. He's a proper batsman for all formats. Instinctively a more T20 player than possibly a test player at this stage, but he's got loads of potential. It's interesting. You look at the facts and figures. You've obviously heard a little bit about Saim Ayub, but there's the career so far. 24 innings, just the 400 runs, average of just over 18, strike rate. Well, that's pretty stock standard. Best of 49 and just the 630s. From what we've seen here, he's underachieved because he's looking better than those figures suggest. Up and over. Could this catch be taken? Launches it forward. Yes. I think it's Gretzky who takes the catch. South Africa get the all-important second wicket. I mean, this unfortunately does happen for Saim Ayub. When he's rolling, when he's conquering the opposition, certainly he gets out. Because he's that kind of a player with that kind of talent where he backs himself to play all shots. It's a major breakthrough for South Africa because he is running away with the show, the left-hander. Impressive knock, nevertheless. 31 he got, and it's 56 for 2. किसानों के इस आलमी दिन पर सिंजेंटा की है दुआ, शाद रहे किसान, आबाद रहे पाकिस्तान। सिंजेंटा, हमारी जमीन, हमारी जिम्मेदारी। Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Really good in the power play because they can hit the ball along the ground and get it through the infield or just over the infield. But when the field changes and they spread the boundary riders, they sometimes don't have that ability to clear. You think Saim Ayub could fit into that mould? No, he's got the power batting to flaunt, but I think he just needs to have
a little quiet moment at times, just a calm moment. After getting such a good start, all he needed was to just play sensible cricket. That's gone fine for 4. On the pads and put away for 4. Not for the first time we've seen a South African bowler just pitch the ball in that middle and leg stump area, and easy runs for Pakistan. Yeah, I suppose where we go in the bowling from South Africa, the delivery to bowl tonight is short and wide. That's the one that's picked up the 2 wickets that have fallen. There's the wicket. Bretsky did well. He actually got there comfortably in the end. I thought he might have to launch himself forward, but we don't call him jet ski for nothing. He's got pace. It's an excellent betting surface. We've established that fact, and so what Pakistan need to do is to establish a firm footing now into this run chase. Make sure that not a lot of wickets fall. It's all about partnerships, and it's not all about that. Yeah, a little bit of shoulder to shoulder. Rassi Fanadisson just mentioning to Usman, you're all allowed to take a little sidestep and go around the bowler if you would like. Getting a little bit sparsy out there. Rizwan will be the key in guarding this run chase for Pakistan. He's got plenty of experience. Nearing a milestone. I think he was 331 runs away from 5,000 runs. 8,000. इस मैजिकल ऑफर को जाने ना दें। अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। शोल्डर्स अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। अब सिर्फ 800 रुपए में। That's pretty decent, averaging just over 22. Economy rate's very good at just over 7. He was fantastic with the bat. Can he back it up with the ball as well? He's one of those guys who kind of fires it in. He doesn't really give it too much air. You can see he starts 90 kilometers per hour. But when he gets it on song, he can get some really impressive bounce and turn. I suppose the worry for him is always that drag down delivery that international batters can latch onto quickly. Attacking the leg stump line. It's the shorter boundary to the offside. So if Rizwan wants to take him onto the leg side, it's the bigger hit, and that's initially what he's thinking, George Linde. Watch out for Rizwan's slog sweep. But he fetches that from that middle and off stump angle, so keeping it on that leg stump angle is the right thing to do. There's an example of the bounce. You can see how that one's actually hit the splice of Rizwan's bat. This is a good start from George Linde. Just asked in Afrikaans to the captain, Andre Klaasen, how about the speed? And Andre Klaasen's reply was gun. And in the modern cricketer's terms, that means good. If you're gun, then you're good. Sweeps and doesn't manage to get hold of it. Almost ends on his back, trying to sweep one and thinking about going through for the single. Tripped himself up. Been a good over because the idea is to block the flow of runs, just to break the momentum. It's a ball, a decent over, not look for a wicket. Yeah, right up. More Georgie. In T20, most times a defensive ploy can work as an aggressive ploy because then the batsman gets a little bit itchy. He wants to get on with it. Yeah, sometimes defensive to the guy who's in, and then if you do get an opportunity to bowl someone who's just come to the crease, then you can start to think about being attacking yourself. Short, and that's punched away, but it's got it. Class is a good start from Linde. Just the 3 singles from it.
65 for 2. Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Food Panda. हेड एंड शोल्डर्स अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस में. Yeah, lack of pace probably did him in the end. Change of bowling again for South Africa. Peter has changed ends. There's the worm comparisons. You can see Pakistan were all ahead, but then just tailed off when Miller got going. South Africa in that middle overs, thanks to the performance of David Miller, which almost seemed risk-free for most of his innings. Superb. Mexican wave is making its way around Kingsmead. It's been a good atmosphere at the ground tonight. It's carved away and it's hit with a bit of spin, so it's going to spin it away from the sweeper, but only managed to. Usman Khan really trying to carve that. I think he was looking for extra cover, to be honest. Yeah, it's a quick ball, 98 kmph. He's got to keep them straight as possible, wicket to wicket. Bit like Zampa. That's too easy for his. Gone just over 10 for the first time. Original rate 9.2. South Africa was 71 for 4. This is when they lost a wicket and up a touch. So Pakistan 68 for 2. He'll be disappointed after tonight. That's nasty. You get the feeling that Donovan Ferreira just lost it in the floodlights, because it doesn't make sense. He almost didn't even get a hand on it. The only bonus was it didn't go to the boundary, but you get the feeling it was straight out of the floodlights. That should have been the third for South Africa. Scoreboard pressure making him play that shot, and he lost it completely in the air, and he had it covered for most part. Oh, that's a freebie. That one's turned nasty for Peter, but it's beaten the batter and beaten Hendrik Klaasen away for 4 bars. Yeah, a little bit of drift. Klaasen not really able to cover the line of that one. Extras booming on 13. Yeah, 4 bars, 8 leg bars, 1 wide. Drags it down and they decide not to go through the single. So 8 runs from that over, 73 for 2. इस मैजिकल ऑफर को जाने ना दें। अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। George Linde to continue. Good first over from him. Have Pakistan got a different game plan for his second? Give himself some room and we're looking for the second, but Similani does well. Covers the ground quickly and a good throw. Let's have a look at here, George Linde. Right over and it's obviously looking to drift it in, trying to attack that leg stump line, but you can see the bounce he's extracting. Makes it difficult for him to be swept. And the key for Pakistan, I think, will be looking to score off the back foot against him. Nice, Georgie.
clever variations from the left armour as well. He's hitting that good length, keeping the ball in that middle leg stump channel, but the pace is really nice. When he's looking to spin it across the right-hander, the pace just drops a little bit. Slog sweep, too much bounce up in the air. Catch taken. George Linde has had an impact on this game with his batting, and now he's starting to impact it with his left arm spin. Not a great shot against the spin, trying for a 6. This really had to be connected and had to hit the middle of the blade and wanted a 6, but was caught in the act. Hendricks there taking a good catch. Usman Khan goes for 9, 75 for the loss of 3, and we'll have drinks as well. किसानों के इस आलमी दिन पर सिंजेंटा की है दुआ, शाद रहे किसान, आबाद रहे पाकिस्तान। सिंजेंटा, हमारी जमीन, हमारी जिम्मेदारी। Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Food Panda. Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Food Panda. किसानों के इस आलमी दिन पर सिंजेंटा की है दुआ, शाद रहे किसान, आबाद रहे पाकिस्तान। सिंजेंटा, हमारी जमीन, हमारी जिम्मेदारी। अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Food Panda. अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। All of a sudden, Pakistan, who were looking good, have lost 3 wickets now. 75 for 3. South Africa was 79 for 4 to go. He gets excessive bounce, and it can be difficult to slog sweep him. George Linde proved to be exactly that for Usman Khan. All or nothing kind of shot. The situation hadn't become that desperate for Usman really to experiment with that kind of a hoik. This really had to be middle. Otherwise, he was a goner, and he was a goner. Tayyab Tahir in at number 5 for Pakistan. There's his record. Very early in his international career, a best of 39. Get on. Lovely. Good time for somebody like Tayyab Tahir to showcase his talent. It usually is considered difficult to bat in the middle overs, in the middle order, when you're supposed to chase 10 and over, but does he have the skill and the temperament? I suppose also it's nice to bat with Rizwan. You'd be hoping that between overs he's getting some really good advice from the captain and the senior player. This ran straight away, shouting for 2. Will they be able to get back? They will comfortably. Nicely placed. But once again, a good over from George Linde. 10 completed, halfway stage, 78 for 3. किसानों के इस आलमी दिन पर सिंजेंटा की है दुआ, शाद रहे किसान, आबाद रहे पाकिस्तान। सिंजेंटा, हमारी जमीन, हमारी जिम्मेदारी।
अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। हेड एंड शोल्डर्स अब 100 रुपए की बचत के साथ, जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। अब सिर्फ 800 रुपए में। Peter will continue from the Amghani end into his third over. Get on! Get on! Get on! Lovely, lovely. Stay on him, stay on him. Come on. It's interesting to try and work out where Pakistan are looking to pick up a boundary. Are they looking for a drag down from Peter, can be able to hammer it away to deep mid-wicket, or Rizwan is very good at sweeping. He's maybe looking for something that's over-pitched. Massive slog sweep, trying to drag it across the leg side and beaten by the line, I would think. Yeah, he likes that line, he likes that length. He's very good at that shot. Missed it this time, so you've got to back yourself at putting this away if you're a Rizwan. Extra pace, extra bounce, little bit of spin to go with it. Oh, close. He had covered the stumps. That ball will probably give him a couple of leg buys, 3 leg buys. Yeah, there's going to be a consultation, because if it is leg bars, Clarkson's considering sending it upstairs, because he went across. He hasn't got a glove on it. Yeah, he's gone upstairs. He has decided. I think actually umpire Aladdin Palaka was saying that the time could be close to up, and Clarkson was saying, well, it can't be, because the ball's heading down to fine leg, and only once it's thrown back and becomes dead does the counting stop. LBW, on-court decision is not out. I've checked the bowler's feet and it's a fair delivery. Front on spin vision, please. Ball appears close to the gloves. Can we confirm with ultra edge, please? Roll it through. Roll it through. Roll it through. Freeze it there. Just take it back, please, Alvin. Freeze it there. I'm satisfied. There's bat involved and no gap between ball and glove. Palace, stay with your on-court decision of not out. Stand by. You're on screen. Signal now. Come, boys, right? It was a soft sound, and that's maybe what lured Heinrich Klaassen into sending it upstairs, but clearly off the gloves. Get on. Yeah. This has been a good squeeze in the middle overs by the South African spinners. Linde's been good, and Peter's put together 1.4 overs in the middle period nicely. Got a bit of a tap in the initial power play, but he's come back strong. Drag down and considering coming back for the second, but I'd be wary about taking on David Miller. Very strong arm from the outfield. Difficult to airlift him because he's at you in no time, the leggy. Quick through the air. It's a lovely picture. It's almost a full house there. Yeah, it's been a good crowd, particularly for a Tuesday night. South Africa 15 runs ahead of where Pakistan are at this stage, but that's a judge does a wide, and don't mind that strategy actually, just throwing it up well outside the off stump. He knows the strength of Rizwan. Rizwan loves to get across and try and target the leg stump, so change of pace and line, just unfortunately too wide. And there's another good example of exactly where you need to bowl to Rizwan when he's looking to take you down. He's only got 27 of 34, 84 for 3. इस मैजिकल ऑफर को जाने ना दें। अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ।
Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Panda. हेड एंड शोल्डर्स अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए अब सिर्फ 800 रुपए में. Rain at some stage tonight, but absolutely none has been witnessed whatsoever. The wind has died down a touch, and it's a perfect evening for cricket out there in Kingsmead at the moment. Pakistan with it all to do. Asking rates now over 11. 100 runs required from 54 deliveries. Lovely, Georgie. South Africa pushing them against the wall. They need at least one boundary in every over right till the end. So somebody really to play a 53 ball 100 for them. You get the feeling there's going to be a moment here where Rizwan's going to try and take someone down. You get the feeling they have to try something, try and get the impetus going back in the Pakistan favour. They started off so well, they were well ahead of where South Africa was, but they're now basically 20 runs behind where South Africa were at this stage, and South Africa had lost 5 wickets. This has been good from Linde. He really is holding a good length, unable for Pakistanis to get onto the front foot and hammer it away, and hasn't been short enough to play off the back foot with freedom. It's been a good 2.5 overs from the tall left arm spinner. But eventually they do get one away. Tayyab middles it, and that's a wonderful slog sweep. That's a big 6. Absolutely nailed it in the slot, and it went the distance. Such a good clean 6 this. Quicker, the ball not really turning across. It was a straight arm ball and met with audacious intent. You get the feeling that Tayyab's going to keep going here. Get out! No, he doesn't. What Rizwan needs to do is to not worry about what if he gets out. I think he goes out there at times thinking that he must not get out, and that just bogs down the entire chase. Yeah, you don't often get someone who's been out there for 35 deliveries that's not even striking at 100%, so he'll have to maybe lift the tempo and the scoring rate. Pushing for 2, but Similani gets to it quickly, and it's a quick release. So although it was one maximum in the over, just 9 runs from it, 93 for 3. अब कोका कोला की 2 लीटर बॉटल सिर्फ 220 रुपए में. खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ. हेड एंड शोल्डर्स अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए अब सिर्फ 800 रुपए में. Enjoy unlimited. .91 from 48 balls, so they've got to go at 9.2 runs per over. Tied to here, 11 off 10 at the moment, and Mohammad Rizwan 28 off 35. He is absolutely key. The worms have just dropped off a little bit, and you've noticed the red worm has certainly just taken off right at the end, and that's because 30 runs are scored off the last 2 overs, including 18 off the last over. So that may really make a difference at the end of this game. We'll have to wait and see. A little bit leg side. And a wide called. So Laine's got to make sure he gets his economy rate down a little bit. It's at 10.5 at the moment. If they continue at that sort of rate, they'll be okay. They'll stick with it. Got to be there and thereabouts every over from here. Clever bowling, just the one. Yeah, clever bowling from Similani, taking the pace off the delivery, asking the batsman to make the power.
especially bowling to the longer boundary, to the offside. And it's not the favoured side for people like a batsman like Rizwan, who like to go across the wicket and try and heave it onto the leg side. Wouldn't be surprised now after facing 35 balls already. He looks for those boundaries and those sixes. Swiping that, you probably heard the call through the stump mic of 2. Come back comfortably for that. His strike rate is just 80 at the moment. Mohammad Rizwan, been there for pretty much an hour. Yeah. You don't often find somebody batting this long, striking at early 80s, especially when chasing 184. I think if there's ever a time that Pakistan need him to hit some big sixes, get the entertainment for the crowd, it'll be now rather than later. Advancing and swiping that on the onside. He's got that fairly fine. He'll try and get back for 2 if he can. Not there, just the 1. That's the shot we're talking about. The way he walks across, it's a strength of his. Scored many runs in that area. Taking the pace off. It's come down. I'm much happier to see him looking with intent, hazy. It felt a bit sedate at the start. If you continue like that, then the rate's going to be heaving upwards. Well underneath that. There is a sweeper, but it's fairly straight. Work to be done. It'll be a good chase if it stopped. It has gone for 4. Desperate dive, but it is 4. Brings up the 100 now. Lovely shot from Tayyib. Over pitch from Similane. He's got mid off up. It's always a risk to bowl this type of length with mid off up, inviting the player to head over. Didn't get all of it, but he got enough. Just a matter of interest, the same stage, South Africa 22 runs better off, but they'd lost 2 more wickets. So they just actually moved past 1, 2, 3, 4, 5. Which is 123 for 5. Hashim, I saw your look on your face there. Slower delivery. Pick that up. Straight to the fielder. Only 1. Yeah, I was a bit confused there, Hazy. I think we were doing maths again. He put me into a dark space. Back in school. Good bowling by Similane, excuse me. Back of the hand, slower ball. So many bowlers these days who utilize the back of the hand slower ball. There was a big phase in T20 cricket where a lot of bowlers were bowling it, but nowadays you don't find many bowlers with the back of the hand. They usually just go with the cutter. So well bowled. I saw Abbas Afridi bowl one earlier today, but you're right. Dug out. It's just past 8,000 T20 runs, by the way, Mohammad Rizwan. End of that over. Good for Pakistan, 11 from it, 104 for 3. शोल्डर्स अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। अब सिर्फ 800 रुपए में। इस मैजिकल ऑफर को जाने ना दें। अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। Match performance. Obviously, if South Africa wins and if they go ahead and you don't see a cameo from any of the Pakistani players or a huge knock from Rizwan, certainly George Linde is lining it up. Yeah, he got 48 off 24 balls. It was a seriously important knock at that stage. It was just after, actually, South Africa had lost 3 wickets for 6 runs. And then there was it was just after David Miller departed, so it was a knock that was seriously needed by South Africa, and Linde provided it. But yeah, bowling beautifully. Khaba Peter in his last over, number 26 at the moment. Oops. I'll have to reload that one. Yeah, I think they're going to have a look whether it was a no ball, actually. Whether the ball has pitched on the wicket.
Umpires just discussing with each other. Yeah, straight away the players knew that. They looked at the umpire, Harris, straight away, and I was very wide indeed. And it's got to go off the cut area. Sometimes there's a line or two dots either end that they can work with. Does it go off the cut area? Looks like it's just inside there. Is it the cut area or is it the line? There is a line or a cut area. It's whatever's decided. So it is a wide. So obviously it is the line. Yeah, so a wide given, not a no ball, of course. Yeah, it would have been a free hit. Would have been a big bonus. Nice follow-up delivery. Sometimes around the world, I've seen groundsmen actually leave the string at the side of the square. They leave it sort of literally embedded in the pitch a little bit, so there is that line. Quicker delivery, nicely bowled by Peter. Yeah, he's pulled it back beautifully after his first over, hasn't Peters? He's had a good variation of bowling at the stumps and bowling outside the swinging zone or outside the slugging zone. That's kind of helped him bring back his figures. Halfway through his over, his last over, just 2 runs from it. If this continues to be a really tight over, if there's no boundaries, then it's going to be a serious effort for South Africa. Beautifully bowled. That is terrific stuff. Peter's been very, I think it's just his 7th T20 game for South Africa. You need a good performance under your belt just so you can cement your have the mental strength that I can play at this level. Oh, there was an inside edge onto the pad. End up a dot ball. Superb stuff. Right. Hard work now for Pakistan. 3 runs from 5 balls. Whatever this might turn out to be from Peter. It is a magnificent over. That is outstanding work. Finishes his spell as well. 4 overs none for 29. That last over just 4 runs. 108 for 3. कोका कोला की 2 लीटर बॉटल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Food Panda. It's in hand. You still have to get the feeling that Pakistan are leaving it too late here. The required rate already at 12.7. Kingsmead has been known to be a difficult place to score your runs at the back end. And in chasing, you need to keep up with the rate for as long as you can. And unfortunately for Pakistan, they haven't managed to do that. Neil Bartman, 2 overs, none for 11. Superb from him in the first couple of overs. He's got that just outside the guideline. Pakistan all-rounder Shaheen Afridi has developed his batting skills over the last couple of years. He'll be keen to hit a few long ones. Sultas dragged, but straight to the fielder, only the single. Yeah, he'll back himself to make a bit of a difference when he gets out in the middle. Yeah, he's going to have to swing from the hip.
Yeah, they've got to go at 13.24 runs to the ode from here. Rizwan, strike rate of just 81.4. Time to here, 112.5. Slower delivery, top stuff from Bartman. In comparison, it was Miller and also Klaasen who are going at 210 plus with their strike rate. Pakistan batters have found it really tough. Credit's got to be given to South African bowlers. And as we're currently watching Othniel Bartman bowling wide, getting the ball outside the hitting zone, bowling to the longer boundary, to the offside. South African bowlers have made it very difficult for the Pakistanis. Clubbed. Is it out? Yes, it is out. Bartman celebrates. That's his first tonight. Great bowling, Othniel Bartman. Thoroughly deserved it. He's kept his composure and the batsmen have come after him. And Tayyib taking on the short ball and holding out to long on. Comfortable catch, Ronald Ferrer. Yeah, that's the wide line I'm talking about. Had to reach it. Didn't get much of bat on it. Uncomfortable catch for Ronald Ferreira. That's the end of Tayyib Tahir. He goes for 18. Pakistan 109 for 4. किसानों के इस आलमी दिन पर सिंजेंटा की है दुआ, शाद रहे किसान, आबाद रहे पाकिस्तान। सिंजेंटा, हमारी जमीन, हमारी जिम्मेदारी। Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Panda. Fine job, 3 for 22, got a wicket in his first over again, came back. They got an important wicket right at the death as well. But then it just got away from Pakistan those last couple of overs. He needs to get some runs here. His strike rate can be a lot higher than 126 when he gets going. I think they've opted for Shaheen Shah Afridi to come in ahead of Irfan. Renowned big hitter as Shaheen Afridi, developing a reputation. It's getting strong and strong. Also that he's a left-hander, to create some sort of difference and difficulty for the South African bowlers. Oh, there's a short delivery. Well-directed short delivery as well. That's a little bit of a wrap, I think, on the helmet. Another look at the dismissal. Comfortable catch. Donovan Ferreira hardly had to move. Perfect height for a catch. No trouble with Afridi at the non-striker's end, by the way. Dug out. Good stuff from Bartman. End of that over, successful one, just 3 from it and a wicket. 1-1-1 for 4. शोल्डर्स अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। अब सिर्फ 800 रुपए में। अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। Fun was listed to come in next. He's got a strike record of 134. Pass Afridi and Horace Ralph drops down to them. They're the next two. They're the bowlers, of course. Afridi can handle the willow a bit. But now it's down to these two guys, Rizwan, and no doubt a license for Shaheen Shah Afridi. Joe Hazy asking rate 14.6 for the remaining 5 overs. That's a tough ask even for the biggest of hitters.
South Africa were 27 runs better off, but also 3 wickets more down, but they were still hitting at this stage. South Africa. Simalani, leg side, picked up, whipped away. That's gone. Very good shot for 6. First ball of the over. Here's a chance for Mohammad Rizwan. Yeah, this is the time. He's got to take this over down and 4 other overs after this. It's a great shot by Mohammad Rizwan. Shamil across the stumps. Got to his favorite pickup shot. Fantastic shot for 6. Yeah, you're right. This has got to be a really big over. They've got to somehow compensate for the fact their last 2 overs went for 30 and that last one went for 18. That's what happens in T20 cricket. Slow delivery, chopped by Rizwan. Just going to be the one. It's been a ploy to Rizwan, taking the pace off, getting it outside the off stump. And with Rizwan having faced 46 deliveries for his 43, he's got to say the plan has worked. It's kept Pakistan quiet, scoring at a rate of 7.7 when the asking rate is 14. Just heard a message from Heinrich Klaassen speaking to David Miller, just telling him to keep chatting to Simalani, keep helping him through this last over of his spell. Build his confidence. That's the name of the game right now for the youngster. He was in the slots but couldn't quite get it well enough. Dragged it a bit onto the onside. End result is just 1. Yeah, the nice agricultural swipe from Shaheen Afridi, only yielding 1 run. With the 6 in the first ball, 2 singles after that. And that's nicely bowled. Slower delivery again. Good stuff. Another dot ball. Yeah, beautiful bowling by Simalane. He's showing his full repertoire of deliveries. The slower ball, the back of the hand, the short ball. It's the short ball bouncer. Very difficult ball to hit. Just a bit of a change of his grip at the last minute, just before delivery. Put it back in his hand a little bit, and also bowled that cutter. And the length was right, the short bouncer, you're right, the slower delivery. Great comeback in the over. 6 off the first ball. Next 3 deliveries have been very tidy indeed. So just 2 runs off those next 3 deliveries, and then 2 off that. So it's a tidy over at the moment. It's okay. It hasn't got out of control. Yeah, he's done well to keep it in check, because as a batting team that's chasing a big score, you're looking for that 1 over of 20 or 25. If he finishes this over strong, he's done exceptionally well. Last ball, slow delivery again. Really good work, the work they've done to Rizwan. Really good. Just a single. So 11 off that over. Top stuff from Simalani. He's now finished. 16 gone, 122 for 4. कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। शोल्डर्स अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। Reload. Oh, that one again. So everybody back into position. Except up here. One for 43. Smelane. More expensive than he would like. Has to
to make sure that this free hit doesn't disappear into the night. Right, here we go, free hit. Shot. Quite out the middle, I guess, just towards the bottom. So just a single and it's a free on strike. 124 for 4 after 16. अब कोका कोला की 2 लीटर बॉटल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। शोल्डर्स अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। अब सिर्फ 800 रुपए में। There's a look at the summary of the match. 183 for 9. South Africa, Miller with a masterly show, but Linde was the man. 48 from 24 and has bowled really well too. 1 for 17 from his 3. Oh, excellent take. What a take, skipper. That is brilliant from Klaasen. Keepers don't get appreciated, but have a look at this grab. This is world class. The angle, the extreme angle, and the ball going between the legs, and have a look at that grab. Brilliant, absolutely greatly anticipated. At pace, 146 clicks that ball. Looking for the Yorker. Shaheen gives himself room and gets it through the offside for 4. It's good time to bowl for an 18-year-old. 15 and over required, so he can be a bit messy, but he's got serious potential. Pace, left arm angle. Good slice from Shaheen Shah Afridi. Beat the infield for 4. Missed it. Bump ball, crowd catch, are all really excited. Mapaka awake to the fact he could go for the run out, but also Rizwan and Shaheen alert to the fact that there's the opportunity for a second, and they scamper back after this missed effort. Not too far away. What was Shaheen Shah Afridi thinking, and his partner also? I mean, there's never a single there. So he's been promoted up the batting order because he can smash the ball hard, but running between wickets, he's still running like a tail ender. It was an appeal, I think, and so the umps have decided they want to check this because he caught it and threw it. Seemed quite obvious that it bounced in the ground, but I suppose make sure of it. Okay, I'm satisfied. The ball is gone to the ground and then shaved the boot, and I have a decision for the big screen. Here's confirmation. On we go. 54 from 21 is what's required. Scamper. Wide called. Sent in to smash it, as you say, Ramiz, and not able to get it away to the fence.
So look at 2 balls ago. Yeah, into the ground and then up off the boot and pad. Yeah, physics will tell you that it can't change direction and go to the offside if it doesn't hit the ground first. Yeah, started so well, Pakistan, and then have lost their way. Their skipper, Rizwan, 46 from 49, has just not quite managed to get himself going. There you go, strikes one, and away it goes for 6. Is that the breaking of the shackles? A half century for the skipper. It's off 50 balls, not as quick as he would like or as his team needs. Well, this is still a doable job. In T20 terms, 46 of 20 is very much doable, and they've got a set article in Rizwan. This really was smashed hard. Change of pace from young left armer, 115 kph, and it did the distance. This really was good hitting, straight down the ground for 6. No need to throw it, you needed to in the end, they'll go for 2. Oh, again he missed it. My goodness. It's a no ball 2 for height. All happening out there. Goodness. I don't know where to start and what to describe. The 10 things that happened in an instance. A couple of dives, a no ball to go with it, a run out also. There's an outside chance of a run out. So this is over the waistline, this delivery, given as a no ball, high full toss. Yeah, clearly over the waistline. But the drama did not end there. There's a serious effort of being run out. Direct hit was missed. Rizwan then wanting to take the strike. There's a chance at the non-striker's end. He would have been a goner again. So 3-4 things happening of one delivery. An injury. So 4. Rather eventful. There's the discussion. Think tank. Which way to go? Seamers or not? Choice of bowlers after this one. He's got 3 overs to finish the innings off. Here's Rizwan. 2 4s, 2 6s, and a 6 to get to 50. The rest of the time hasn't found the boundary enough times, and so that strike rate not as high as he would like. As you say though, Rambo, it's how he's started, but if he can still get the team over the line, then all else will be forgotten. I mentioned it earlier also that he takes this extra responsibility at the crease as a skipper, as a leader. I think he's got to divorce the 2 acts. When he's out there, he's got to be thinking like a batter. Look at the situation and then form a strategy accordingly. Free hit. Oh. Enough. Just enough. Maximum. Just the momentum that Pakistan need as they try to charge to this target. This was a slice, nothing more than that. Once again attempting a slow ball, probably slackening the pace, and he's not really been very good at it. The angle and the lack of pace providing Rizwan with an excellent opportunity to hit it over the fence. It was a
a freebie, a free hit. And this was absolutely nailed. And so required rate from 15 has come down to 11.68. Yep, and that means that it has shifted. The pressure shifts to the bowling side, where the man who's now found his touch had just the right time. Just a single. Importantly, Rizwan retains the strike. 148 for 4. Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Panda. अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। हेड एंड शोल्डर्स अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस न आए। अब सिर्फ 800 रुपए में। They elevated Shaheen Shah Afridi to join Muhammad Rizwan. Partnership 39 from 17. Here's Linde. Oh, that's wide. Trying to stay tight on the stumps and force him to work the ball leg side. Certainly, I don't know why, because they had it covered 15 and over on cruise control, and now looking just a little bit uptight. ਕੀ ਆ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ End of the bowling innings. He must prevent blows being struck with his left arm spin. The quick single, the rotation was to get the lefty on strike and let him at the short boundary. सीवीटी ना साजी ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀवीटी ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ 4 ਦੇ 4 ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ 50 रन्स को क्रॉस करते हुए टीम पाकिस्तान मर्दे रन टीम पाकिस्तान को मिल गया है, लेकिन स्टंपिंग को चेक किया जाएगा। 10,63,626 सब्सक्राइबर्स कर दिए हैं आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 426 सब्सक्राइबर्स किए हैं आपने। Okay, you're gonna have to just go back 2 more frames for me, please, Elvin. Okay, have you got anything from the opposite end? Okay, ball has been collected cleanly. Puts off. Okay, can you zoom that for me, please? Okay, foot's on the line at this stage. Foot's still on the line. Okay, I'm satisfied and the bails are dislodged. I have a decision for the big screen. Decision pending. Is it OUT?
Is it? Yeah. It was a huge roar from the crowds. They're absolutely loving this now. They needed a wicket to fall, and Shaheen Shah Afridi initially back in the box, and then overbalanced because it was a wider angle targeted by Linde. What a night he's had, Linde. Afridi. किसानों के इस आलमी दिन पर सिंजेंटा की है दुआ, शाद रहे किसान, आबाद रहे पाकिस्तान। सिंजेंटा, हमारी जमीन, हमारी जिम्मेदारी। Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Panda. Irfan Khan. Strike rate 134. Right-handed batter. And he comes in with a simple brief. Rizwan at the other end. But really they need to go. Time running out. Get out, Darvo! Off the mark straight away, rotate strike straight away. Yeah, clever bowling. Really was very clever. Good stumping in the end from Klaassen. He had to pause just a little bit to collect the ball from a wider angle, and then he whipped the bails off just when it was needed. Very good stumping. Singles or wins. As the bowler at this stage, just don't want to go off to the fence or over the fence. He's gone for just the 1-6. George Linde. Straight up in the air. Catch taken. Another one for Linde. He's been dynamite for South Africa tonight. Yeah, it had to make more sense than that. Trying to lift the ball for a 6, and it really had to be collected in the middle of the blade, not to be Irfan surrenders. Not only a wicket, but a dot to go with a wicket. And required weight once again jumping to over 13.29. Only could get 153 for 6. किसानों के इस आलमी दिन पर सिंजेंटा की है दुआ, शाद रहे किसान, आबाद रहे पाकिस्तान। सिंजेंटा, हमारी जमीन, हमारी जिम्मेदारी। Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Panda. From the 14 balls that remain, Abbas Afridi, despite those numbers, is able to strike it. And that's what he'll be looking to do here. Oh, that'd be close. It's out. The finger goes up. A career best for George Linde. Fast, straight, and struck him in front. Reviewed straight away. TV umpire to director, we have a player review for LBW. On full decision is out. I've checked the bowler's feet and it's a fair delivery. Front on spin vision, please. Front on coming up, Harry. Ball appears close to the bat. Can we confirm with Ultra Edge, please?
Outrage coming up. Okay, flat line when the ball goes past the bat. No bat involved. Ball tracking when ready, please. Original decision is out. Pitching outside off. Impact in line. Wicket hitting. Steven, stay with the on-field decision of out. You're on screen. Signal now. Yeah, very good call. Very straightforward call. के इस आलमी दिन पर सिंजेंटा की है दुआ, शाद रहे किसान, आबाद रहे पाकिस्तान। सिंजेंटा, हमारी जमीन, हमारी जिम्मेदारी। Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Food Panda. Haris Ralph is in on a hat-trick ball. Previous best for George Linde, 3 for 23. Here he is, 4 for 21. Hunting those stumps, willed on by this Kingsmead crowd. Oh, he's got him! Surely! Yes, he has! Struck in front! He's got a hat-trick! Oh, flying! On cloud 9 is George Linde. First with the bat, and now here he is with Pfeiffer and a hat-trick to boot. My goodness! What a comeback this is! TV Umpire 2, Director, we have a play review for LBW. On-field decision is out. I've checked the bowler's feet and it's a fair delivery. Front on spin vision, please. Doesn't appear there's any bets involved, but can we confirm with Ultra Edge, please? Ultra Edge coming up. Okay, flat line when the ball goes past the bat. No bet involved. Can we go to ball tracking when ready, please? Original decision is out. Pitching in line, impact in line, wicket missing. Steven, you need to change your on-field decision from out to not out. Stand by. You on screen? Signal now. There you go. No. इस मैजिकल ऑफर को जाने ना दें। अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda. Back to it then. Certainly, it's become a bit boring. I don't know how to lift myself up now. Oh, a little matter of 31 for. फाइट करते रहे लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है, हमारा अच्छा हुआ। 31 गोल बनाया कि मैं देख के आसार आए किधर होंगे थे चाचा होंदा नाल होंदा फखर चाचू इफ्तिखार सही इदां दे मैच खेलण वाले ਉਹ बोले यार गुड सिंगल यार Looking for a big hit, couple of sixes to make it interesting for Pakistan. पीछे रह गया ओवर केड़े रह गए पीछे His intent. Pakistan did promise a great deal in the last 2-3 overs, and then Linde came in and destroyed their hopes. Wonderful shot. Rizwan fights on.
take it till the last over, to the last over, the last 6 balls. And we've seen plenty of professional sides crumble and feel the heat, the pressure. Finds the fielder this time, and he's not going to take a single, taking the responsibility of the chase onto his shoulders, much like George Linde did when he was batting at the back end of South Africa's innings. Stood there and laced it to all parts. Needs a 6. This ball has got to go over the rope somehow. He's got to try to hit this one for a 6. Shot. It'll go for 4. Struck fiercely. And the dive is in vain from Ferreira. It's on. Still on. Definitely Rizwan into the 70s. It's looking lethargic and a little out of sorts. Not anymore. This is turning out to be one great effort from the skipper. Anything can happen. 23 of 7 balls, 3 wickets in hand, Pakistan. Oh, it's in the gap, it's in the gap. It'll go for 4. Rizwan playing a blinder here, just the way they'd have wanted to end that over. Hope still alive for Pakistan. 19 to get from the last. Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. हेड एंड शोल्डर्स अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस न आए। अब सिर्फ 800 रुपए में। इस मैजिकल ऑफर को जाने ना दें। अब कोका कोला की 2 लीटर बोतल सिर्फ 220 रुपए में। खाना बनाए मैजिकल कोका कोला के साथ। Haris Rauf on strike. Job is to get Rizwan to the strike. Maybe go for broke Pommy. He's got to look to hit a 6. I mean, still they've got wickets in hand. The jeopardy is more in losing the deliveries. And so you go for broke, you get out, the next guy must come and it's a dot. Here we go. Probably the best way to go. A single, hand it over to the skipper who's 74 from 61. A slow innings, particularly the first half of it, but just at the right time found his feet and has taken control here. He has 5 balls to get these 18 runs and drag his team over the line. A nervy affair for absolutely everybody. Extras will have to feature again if Pakistan to make this interesting. 23 runs conceded through extras round the stumps. So the idea is to just get that ball back into that middle and leg stump channel. Up in the air! Mapaka gets Rizwan! A comfortable catch for Nabapita. A cheer in Kingsmead, a loud one, for they feel that might well be the game won. What could he have done better than this? A slice maybe, is looking for that pull shot, then go back and across, then probably have the pace also to play that pull. It was a good high bouncer, slicing it up in the air for shot third to take a cat and so. A very good innings comes to an end. He fought right till the end, got 74. Pakistan 8 down for 166. किसानों के इस आलमी दिन पर सिंजेंटा की है दुआ, शाद रहे किसान, आबाद रहे पाकिस्तान। सिंजेंटा, हमारी जमीन, हमारी जिम्मेदारी।
Enjoy unlimited free deliveries and order on and on and on with Panda Pro. Food Panda. You'd say, with the longer boundary going short. Hello. Hello. They'll be back for two. Would have hoped that the pace would take it away off to the fence. It doesn't quite. 16 from 3. Need a sixer. 2 sixes and 4 to be precise. But this was the moment for South Africa. This had to be taken, so it became from a straightforward catch to a precious catch. Well held in the end. Lovely when it gets this close. Oh, look at that for body language, whether it's in the crowd or amongst the team. Just past. It won't get to the fence. Applause and cheers, because the equation is an improbable one. Well, it's 10:02 local time, so the crowd had to wait to clap and make sure that it turns out to be a South African win till 10:02. Even the applause is not quite to say, oh, it's done. The extras count 23. And so don't want to count their chickens. Want to make sure that it actually is. Look at that. Look at that for body language. They've been kept well in it all the way through. That'll be a single. 1 to go. Just a quick recap of where Pakistan got it wrong in that run chase. I think when that third wicket fell, there's a slowdown, a massive slowdown. And then they couldn't recover because then Tayyib got out and Rizwan played a indifferent hand because he didn't want to get out during that period, and that just slowed down the entire process. But credit to him really for ramping it up to get to 70 of no time, almost run a ball. It was a very productive meeting, though. I think we're just moving through the process. Did he commit to keeping women in their current roles in the military? He is very supportive of women in the military. It is one thing that we discussed. And joining us now is NBC News Capitol Hill correspondent Ryan Nobles, Washington Post senior national political correspondent Ashley Parker, and New York Times chief Washington correspondent Carol Hulse. So, Ryan, how significant is the change in tone? We're taking her temperature day by day, and I know that's a little difficult as a reporter. One thing I noted was that there were anti-Ernst TV commercials on the air over the weekend in Iowa when she was at home by MAGA people. So, and she's up in 26. Yeah, and I do think there's a pretty heavy pressure